I've been a pretty recent convert to veganism. It's been just a decade. Okay, just a decade. Just a Okay, decade. nothing. I went to watch a movie. अपने प्रति हिंसा है मांसाहार तो आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं और हम जाके स्ट्रीट डॉग को थोड़ा सा पानी दे देते हैं, थोड़ा सा रोटी दे देते हैं और फिर जाके चिकन भी खा लेते हैं. तो आप एनिमल लवर हो क्या? Dr. Zakir Naik recently released a video debunking some of the statements that you have made. It is so amazing the extent to which a person can go just to defend his cultural biases. Can you be a Hindu if you are eating meat? You can be a Hindu, but Every 16 minutes, a woman is raped in India. Yes. ये क्यों हो रहा है इंडिया में? you cannot have veganism without essential spirituality. Problem that I face there is that a lot of vegans consider religion as a problem. Overpopulation biggest reason है biodiversity depletion का. For example, if I have a vegan who is on his way to get his third kid, to hell with his veganism. Hey guys, welcome to Kindness with Amy. Today I am joined by Acharya Prashant ji, who I am super excited to speak to and learn more about. He is a prominent spiritual thought leader. He is an author of over 200 books and also the founder of the PrashantAdvait Foundation. Thank you so much for joining me. I'm so excited to have you. Thank you, Amy. Very generous introduction. I don't know about generous, but I'm just speaking facts. I would love it अगर आप थोड़ा सा बता सकते हैं कि what has been your journey firstly into being inspired to adopt veganism? I've been a pretty recent, if I could say, convert to veganism. It's been just a decade, 2014. Okay, just a decade. Just a Okay, decade. Nothing. So, I've never touched any kind of meat in my life, or even eggs. Right, so you were like a vegetarian. Yes, lacto-vegetarian. Yes, but I was, and I don't consume milk as such, but paneer and milk in other forms was something I was taking. Cheese, for example. So cheese, paneer, kheer sometimes, those things I was taking. And then I had a favorite rabbit, and she was not well in one leg. So she could not move around, jump and hop with the other rabbits. I had quite a few of them. This one stayed with me because the other rabbits, she couldn't gel or cope with them. Okay. So she would stay with me right on my work desk. And such were those days, 2013-14. I was in a particular phase. I used to sleep just by my work desk. I was reading a lot, consuming a lot, that particular phase. So I would stay in my cabin, de facto live in my cabin. And this one was my companion. A little rabbit. So yeah, the rabbit. So the entire day I would be working. Here's my desk, here's my laptop. And because she was unwell in one leg, so she wouldn't move around much. She would sit on my table. She had her space there. And there was her food. Gently I would feed her. And she would sit there and she had nobody else to go to. So she would look at me, I would look at her. And she was quite unobtrusive. Won't do much. She knew that I am in the middle of business. But when it was night and I would lie down, that's when she would want to play. And I'm almost half asleep and I find, there is something on my chest. And that's her time. So there was this relationship. And I didn't know much about rabbits. And unfortunately, in that part of the country, you also don't have vets that specialize in rabbits. She fell unwell. And I actually gave her some of the same food that I ate. My mistake. I didn't realize that it won't be good for her, especially because she isn't moving around that much, so she won't be able to digest it properly. Right. And rabbits don't complain much. You also know that they don't utter too many sounds.
Also, they don't display that they are unwell. She just stopped eating. Okay. And that happened for a couple of days. I took her to the vet. The vet didn't know the extent of the ailment. She died. And I was extremely upset for weeks altogether. I went to watch a movie that phase. In that movie, they were displaying an experiment being conducted on rabbits. And the rabbits that they chose as a model to display in the movie on the screen was much the same as my rabbit. So they were conducting that experiment. And though the movie was not particularly about violence on animals, but that scene, that part, that theme just stuck. Yeah. Just stuck. Okay. And that moment itself, I don't know from where my mind drew that connection. But it became clear to me that I'm quitting milk. Though there was no mention of milk per se in the movie. You just made that connection. I just made that connection and I said it's over. It's over for me. Right. And it's been over since then. Wow. Do you think that's what people simply lack? Is that connection? Is that connection? Because they're so disconnected. जब आप दुकान पे जाते हो दूध खरीदने या मीट खरीदने, वो connection नहीं है दिखाई देता कि ये कौन था. It's more कि ये क्या है. तो वो it's such a disconnect. And ऐसा नहीं है कि people are like horrible people. They have dogs घर पे. Yes. They have other animals. They have that love. Loving dad, doting Yes, mothers. they have love. Yes. ऐसा नहीं है, बस वो connection नहीं बना है. So I wanted to ask you, बहुत spiritual leaders हैं. Okay, मैं नाम नहीं कहूँगी, but I think हम guess कर सकते हैं कि कौन कौन है जो preach करते हैं spirituality को लेके कि अहिंसा, non-violence, all of this stuff preach करते हैं. लेकिन वो फिर ये भी प्रमोट करते हैं कि आप घी खाइए, दूध पीजिए, आप दूध पीजिए. ये एक इम्पॉर्टेंट है अपने हेल्थ के लिए कि आप दूध पियो, ये सब चीज़ें. और जब आप पॉइंट आउट करते हो इन लोगों को कि देखिए ये दूध पीने से आप सपोर्ट कर रहे हो डेयरी इंडस्ट्री में गाय को मारा जाता है, ये ब्ला ब्ला ब्ला, suddenly it's like a blank wall. So why is that? Why is there such a shut off of this conversation amongst very prominent spiritual leaders? You see, I'll have to go into the reason in some detail. So give me some 10 or 15 minutes to elaborate. You see, when you have a tree growing upwards from the roots, inside out from the seed, there is the seed, and inside the seed the tree is present in some form, in the germ form, and the tree grows inside out. Then you very well know that whatever is there in every twig, every flower, every leaf was present in the seed in some form, and that the whole thing would have a commonness, a uniformity of some kind. It's an organic growth. It's coming from within the seed. Whereas, let's say you have to put up a Christmas tree. New Year is approaching. You have to put up a Christmas tree. Then maybe you will bring stars from here and socks from there, and more stuffs to hang on it from somewhere else. It would be an assembled tree with 40 things coming from 40 places and having no organic life of its own. The value system that most people carry, including the gurus you are mentioning, is an assembled value system. It is not an organic value system. It is an outside-in value system, not an inside-out thing. In the sense, this part of my moral compass I absorbed from here, and this part from there, and that from there. Right. Nothing came from within me, therefore nothing is speaking to the thing next to it. Nothing is able to talk to the other thing, so all those things
within my value system remain fragmented, discrete, with no real organic relationship with each other. You see, you can take a few cells from my skin and something from my hair and something from my bones and my blood, and you will find that the genetic material is the same. In our value body, the genetic material is not the same. We are absorbing things randomly, very helplessly, right? So somebody told us it's bad to harm an animal and we'll absorb it. Somebody told us it's great to drink milk, we'll absorb that also, without ever being able to see the contradiction contained in it. मोरल साइंस की बुक है, उसमें एक दिखाया कि एक बच्चा कुत्ते को पत्थर मार रहा है, और वहां ऊपर लिख दिया बैड, और ऐसे रेड क्रॉस बना दिया। सबको पता है, सबको पता है कुत्ते को पत्थर मारना बैड है। उसी के बगल में दिखाया कि रिंकू अच्छा बच्चा है और उसकी मदर उसको ऐसे दूध का ग्लास दे रही है, ठीक है, और वहां पे क्या दिखा दिया, ग्रीन टिक, ये अच्छा है, वहां रेड क्रॉस था, ग्रीन टिक। तो ये ऐसे है, 2 पेजेस हैं बुक के, ऐसे है। और ये दोनों ही बातें जो बच्चे को हैं वो कहाँ से आ रही हैं, बाहर से आ रही हैं। वो ये दोनों बातें एब्जॉर्ब कर लेगा और दोनों बातें उसके दिमाग में साइड बाय साइड पड़ी रहेंगी और वो कभी देख नहीं पाएगा कि ये दोनों बातें तो आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। एक बात में आप दिखाना चाह रहे हो कि नॉन वायलेंस और कंपैशन, और दूसरे में वायलेंस है और सब्जुगेशन है, और ये बात कि ये इतना हेवी कॉन्ट्रडिक्शन है उसको कभी दिखाई नहीं देगी, क्योंकि दोनों ही बातें बाहर से आई हैं। वही सॉक्स एंड स्टार्स ऑन द क्रिसमस ट्री, दोनों में से कोई बात उसके भीतर से नहीं आई है। तो ये जो हमारी रिलीजियस जनता होती है या जो स्पिरिचुअल टीचर्स होते हैं, have they really seen life on their own? Is their value system developing from the seed within? That seed within classically is called the pure self. Pure self, the one that you truly are. So from there, when your value system arises, then you know this is right, this is wrong, and all of that has a certain consistency. All of those things then reconcile with each other. The value system that the common man professes has just inconsistencies. It's like those things that kids use, what's it called, logos? Legos. Bits and pieces and parts that will never fit together. And yet we somehow manage to carry on with life. The fellow who says I'm a loving father is prepared to sacrifice a goat on a festival. The lady who says, oh, I'm the most caring mother that ever can be, is continuously feeding milk and eggs to her daughter. And she does not see that love and that thing just cannot go together. Also, that things like love cannot be compartmentalized. You cannot say, I'm a loving person towards this one in this relationship, and I'm not loving in that relationship. But that's how the social concept of love is. Because that concept again is coming to us from outside, from literature, from popular culture, from movies, from fiction, and that's how it is shown. You love one thing greatly, therefore you are an enemy of the other thing. I love my community greatly, therefore I'll assault the other community. I love my faith, therefore all other faiths are my enemies. I love my family, therefore I can destroy the entire world for my family. And you don't see that love doesn't work like that. If you are loving, you are loving. Love is not something you can reserve for just this or this or this and say, for all those I have no love at all. That वो चीज़ हम ना हमको सिखाई जाती, और भीतर से उठे इसका तो कोई सवाल ही नहीं है। और एक्चुअली हम अक्सर सुनते हैं कि लोग हमेशा हमसे कहते हैं कि एमी तुम एनिमल्स के बारे में बात करती रहती हो, तुम ह्यूमंस के बारे में केयर नहीं करती हो, सिर्फ एनिमल्स के बारे में केयर करती हो। I'm like, किसने कहा कि मैं ह्यूमंस के बारे में केयर नहीं करती हूँ? I just so happen to be talking about the voiceless. I just so happen to be talking about them. My circle of compassion is open to everyone. ऐसा नहीं है कि मैंने चेरी पिक किया कि ओ कुत्ते और कुछ ह्यूमंस। It's like it's everybody. दूसरी बात, अगर आप सचमुच जानवरों की भलाई के लिए काम कर रहे हो तो आपने इंसानों की भलाई के लिए भी काम कर दिया। वेलनेस इज नॉट अ फ्रैगमेंटेड थिंग। अगर आप वेलनेस के व्हीकल हो, कैरियर हो, तो या तो आप सबके लिए वेलनेस लेकर आओगे,
या किसी के लिए नहीं. It's an absolutist thing. Yeah. Binary. ऐसा नहीं हो सकता कि मैं जानवरों के लिए बहुत अच्छा हूँ और इंसानों के लिए बहुत बुरा. और अगर कोई ऐसा है जो जानवरों के लिए बहुत अच्छा है और इंसानों के लिए बहुत बुरा, तो फिर वो जानवरों के लिए भी बहुत बुरा होगा. इसी तरीके से अगर कोई कहता है कि मैं अपने परिवार के लिए बहुत अच्छा हूँ पर शेष विश्व के लिए मैं बुरा हूँ, तो वो अपने परिवार के लिए भी बुरा होगा. और ये मैं बहुत बार समझाने की कोशिश करता हूँ. इफ़ यू आर करप्ट एट योर वर्क प्लेस, if you are violent on your dining table, then you cannot be good even towards your kids, your family, your father, mother, son, daughter, wife, husband, anybody. जो अच्छा होगा उसकी मजबूरी ये होगी बेचारे की कि उसको सबके लिए अच्छा होना पड़ेगा. और जो बुरा होगा वो चाह कर भी किसी के लिए अच्छा नहीं हो सकता. सेलेक्टिव होना पॉसिबल नहीं है. जस्ट एज if you have the mango seed, गुठली, उसमें से जो पूरा ट्री खड़ा होता है ना, वो पूरा ही मैंगो ट्री होता है. आप ये नहीं कह सकते कि इतना पार्ट तो मैंगो, इतना नहीं है. और जिन्हें आम के पेड़ों का पता होगा वो ये भी जानते हैं कि आम का फल और आम की जो पत्ती होती है उसकी खुशबू में कुछ ना कुछ समानता होती है. वो पता चल जाएगा कि ये एक ही जगह से सारी बात आ रही है. जो आम होगा वो पूरी तरह से आम होगा और जो नीम होगा वो पूरी तरह से नीम होगा. तो वो जो इंटीग्रिटी होती है उसी का नाम है. वी टॉक ऑफ द वर्ड इंटीग्रिटी एज अ सिनोनिम ऑफ ऑनेस्टी. इंटीग्रिटी इज बियॉन्ड ऑनेस्टी. इंटीग्रिटी इज वननेस. इंटीग्रिटी इज टू लेट योर एंटायर वैल्यू सिस्टम, योर होल पर्सनैलिटी blossom from one single common center. Classically it is called as the self. That's integrity. Yeah. That we lack, that we utterly lack in, because that's not brought to us. What's brought to us is bits and pieces of this and that. कहीं की ईट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा. A bit from here, a bit from there, stuff from all over the universe. इसकी बात, उसका ओपिनियन, उसका कमांडमेंट, और वो सब मिल करके हमारा वैल्यू सिस्टम बन जाते हैं एकदम हौच पौच. और वो सारी बातें सब आपस में इनकंसिस्टेंट होती हैं. There was actually a quote, I'm going to just made me think of it and I marked it क्योंकि हमने पढ़ा था, मुझे बहुत अच्छा लगा. It says यहाँ पे कि compassion is not part of spirituality. Compassion is spirituality itself. Yeah, wonderful. And I loved this comment because that is all it is. That is it. It's not ki this, that, idhar, udhar, this temple, that. It's to me, it's none of that. It's literally when you're truly compassionate, to me, that is spirituality. Now, you might find it either delightful or surprising when I say that the same thing in the same sentence, I can replace compassion with realization, with courage, with many other words. So I could say courage is not part of spirituality, courage is spirituality itself. I could also say love is not part of spirituality, love is spirituality itself. I could also say attention or meditation isn't part of spirituality, it's spirituality itself. What does that mean? That means that all these things go together. These things don't exist in silos. They go together. So what you call as spirituality, if that is the seed, then these are the different branches. Compassion, love, understanding, courage, inquiry, attentiveness. They all go together. Where you would find one, you would necessarily find the others as well. And if you don't find one, bad news is that you won't find the others as well. You could say, I'm a very meditative person, but I lack compassion. Then you lack meditation as well. It's not possible to have meditation without compassion, because both meditation and compassion are outgrowths of the seed of self-knowledge, which is the essential spirituality. So we don't realize it that way. Common morality by definition is fragmented. It implies being good to this and being bad to that, being related to this and being unrelated to that. In fact, it is taken as commonsensical that if you are loyal to this, then you have to be disloyal to that.
It doesn't work that way. It won't work that way. So, as you know, there is a prominent Islamic thought leader, Dr. Zakir Naik, if I have said that correctly, I don't know. Have I said that correctly? Almost. Who knows? Anyway, so he recently released a video where he was debunking some of the statements that you have made, and I watched his entire video and I watched the things he said. One of his arguments was that you had said in a video that vegetables provide us with all of the amino acids. He then said that vegetables do not provide us with all the amino acids. Almost all the non-veg food, they are complete protein food. Complete protein means all the 9 essential amino acids are present. As far as vegetables are concerned, the vegetables, they don't have all the 9 amino acids, all the 9 essential amino acids. There may be exceptions. First, he said none of the vegetables provide us with amino acids. Then he said 99% of the vegetables provide us with amino acids. Then he said 95% of the vegetables provide us with don't provide us with amino acids. And I just wanted to clarify, like publicly, that this is completely incorrect because according to the NCBI, vegetables provide us with all 9 essential amino acids. And this is just factual. That's true. And the thing is he was actually commenting about you, saying that inka koi scientific background nahi hai, ha ha ha, obviously. And I'm thinking, inka kahan se hai scientific background? Ki ye completely nonsensical, non-scientific stuff he's saying. Anyone can look up peer-reviewed research, clearly see that vegetables provide all the correct amino acids. And I don't understand why is this desperation to like hang on to animal flesh. What is this? Just historical and cultural reasons, nothing beyond that. That's it. You know, it is so amazing the extent to which a person can go Yeah. just to defend his cultural biases. That's all. That's the thing, because he's standing behind a guise of science to justify it as an actual physical requirement. Yes. Not saying ki kyunki karna hai, tradition hai, culture Modern ye hai. science is being used to justify primitive superstitions. Yeah, exactly. That's a really good way to put it. Exactly. Yeah. There was Out of the total 20 amino acids, Yeah. 11 anyway the body is capable of Yes. manufacturing on its own. Yes. The remaining 9, it's true that you do not find all the remaining 9 together in any one piece of vegetable. That's true. But then who on this earth consumes just one particular kind of vegetable? Mm. A typical vegetarian thali consists of fruits, nuts, seeds, grains, legumes, roots, Yeah. so many things on so many different days. Yeah. And together, all of them are pretty much sufficient in providing all the amino acids. The amino acids argument has no ground at all. Nothing. So I don't know if you know, but according to new research, I'm going to share some research Yes. papers with you. It's been found that हमें लगता था कि like some vegetables like soy को ले लो, quinoa को ले लो, some vegetables have all 9, ठीक है? लेकिन ये thought था कि a lot of vegetables में 6 हैं या 7 हैं या 5 हैं, ठीक है? But what's been established is that actually every vegetable does have all 9. Wonderful. Because of the nature in which it works in the body. Wonderful. So for example, I was talking to a nutritionist recently and she was telling me that actually if someone, for example, ate only broccoli, Okay. they will get all the amino acids. Wonderful. I'm like, that's crazy. Even because better. We never hear this information. Even It's better, like, even better. because also हमारा knowledge भी बढ़ा है ना. So much studies are happening every day. Wonderful. And these studies go for like 10 years, 15 years, right? Right. And so only now all this data is coming out with stuff that we didn't realize. So Dr. Zakir Naik says, if Almighty God wanted us to eat only vegetables, then why did He give us canines? And he uses this as a justification to consume animal flesh. And it got me thinking that the world's largest herbivore, which is The gorilla. hippopotamus, largest. Yeah, hippopotamus. Hippopotamus. Talking It primates. has- yes, Yes. yes. Also has canines. So how can we say that, having canines means we should eat meat when
a hippopotamus, who's also a herbivore, has giant canines as well. I think it's just a very stupid argument. Right. Also, I mean, if you just commonsensically look at the kind of canines that we have, are they capable of tearing raw flesh apart? Do they have that capability? You look at the canines that a wolf or a tiger has, and then you look at the ones that we have, the poor ones. These aren't even capable. These are more suited towards peeling off layers of vegetable matter. Yes. So these canines aren't going to prove the point that the gentleman wants them to do. Also, if you want to talk of teeth, then our jaws are capable of side-to-side lateral movement. Yes. That's not a characteristic that you find in carnivores. Yeah. This is an evolutionary characteristic of organisms that are meant to continuously chew their food, where the food is supposed to remain in the mouth for a while for the purpose of being chewed, and also for the purpose of the saliva containing the particular enzyme, the amylase, for that to start the digestive process right in the cavity here. So if you start talking of canines, first of all, the canines argument is invalid, very invalid. If you look at the hippopotamus or the gorilla, some people come up with the fantastic thing saying gorillas are not exactly herbivores. Yes, but because they eat termites and very small insects. Let's not call them carnivores. It's like hardly any animal protein they're having. एक दो insects खा लिया, that does not classify as like anything. तो अगर हम सिर्फ इसकी भी बात करें तो ऑन द कॉन्ट्रेरी ये यही प्रूव करता है कि हम हर्बीवोर्स हैं. कैनाइंस की हम बात करना चाहते हैं, इंसिजर्स की भी तो करनी पड़ेगी. ये कैसे हमारे ऐसे होते हैं क्या शेर चीता के? और ये जो पीछे चपटे हैं, ये मोलर्स एंड प्री मोलर्स, ये क्या ऐसे होते हैं किसी कार्निवोर के? सिर्फ ये जो दो यहाँ कैनाइंस हैं, इनकी वजह से एक बहुत फेलिशियस आर्गुमेंट रखना कहीं से भी तर्क संगत तो नहीं है. I was talking of the salivary amylase. That's not something that you find in carnivores. That's an enzyme meant to initiate the breaking down of starch into simpler carbohydrates, so that your stomach and then the intestines do not have to do all the hard work. That we find in us, that we don't find in a cheetah or in a wolf. So even this proves that. That in other discussions, it so happened that I said that our entire physical structure, right from here till there, proves that we are not designed to consume flesh. Eating flesh is a technical and a cultural thing. Technical because our system won't be able to readily digest raw flesh, because we have the inventions called fire and the technology called cooking. Therefore, we are able to somehow adapt ourselves to consume flesh. And secondly, it's cultural. There were regions in the world where historically this kind of food was practiced, and so it has carried down from there, and now people want to defend it in the name of cultural legacy and religious pride. Let's simply accept it that this is the central reason. Otherwise, this thing is not configured to consume flesh. I started by talking of the eyes. Our eyes, they have trichromatic vision, which means that we can look at the entire spectrum of colors. You remember when we were kids, we were told that you take the 3 primary colors and from them you can make all the colors. And then there were these 3 colors you were given and you mix them in different proportions and you found that, wow, all the possible colors are emanating from them. So our eyes, we know of the cone cells. They make sense of colors, and that's when the brain is able to classify something as of a particular color. We have all 3 types of cone cells. Now carnivores don't have them. Carnivores have bichromatic vision. We have trichromatic vision. The reason is simple. If you are a herbivore, your food object
would be a static thing, right? Fruits don't run, but rabbits do. If you're a carnivore, then your food object is dynamic. You're going to chase it. So your eyes require a different kind of evolutionary adaptation. Our eyes, on the contrary, require to be very particular with colors. Because one food item, one vegetable food item, of a particular color can have one nutritional meaning. And if it is of a different color, the meaning can be totally different. It could even be rotten. We know of green mangoes and the yellow mangoes. We also know that it's not just the taste that is different, they also differ in the acid content that they have. You take an utterly raw mango and you can actually fall sick. So our eyes are more trained to differentiate even shades, even slightly different shades of colors, because that's what a herbivore needs. On the contrary, a carnivore needs eyes that can make sense of a swiftly moving object like a deer or a rabbit or something. Right? And it does not really need to make too much sense of color. So most of the carnivores, you would find them having bichromatic vision. They will not be able to see all the colors that we do. So the eyes themselves tell the entire story. You are not meant to be a hunter or a flesh eater. You can do that, but that's an adaptation. That's a choice that you are making. And if you have to make choices, why make a choice like that? Then come to the nose. Look at the smelling ability of a dog. We have sniffer dogs, not sniffer human beings, right? Why must they sniff so much? Because they are supposed to hunt. Therefore, they must be able to sniff it from a long distance. And go up to there. Your nostrils are not, your olfactory cells are not having that capability. This we have already talked of. Then you look at the stomach. Compared to our weight and our entire size, the size of our stomach is relatively very small. Why? Because a herbivore consumes food the entire day. Because it needs calorie inputs the entire day. It must eat at least 4 or 5 times a day. Ideally. You look at a monkey, it is munching the entire day, is it not? That's not the behavior of a tiger. A tiger eats once and then relaxes for 4 days. Or think of a python. Eats once and sometimes relaxes for 30 days. Whereas herbivores, they continue to eat very frequently. Therefore, the storage part is small. For a carnivore, you will eat once, therefore you have to store it all. You have to, so their stomachs are very large in size as a ratio of their body. Then you come to the intestines. Our intestines are pretty long because they have to digest, absorb fibers and cellulose and such material. So the total size of our intestines is 8 times that of our torso. If you look at a carnivore, the typical proportion is 3. The number is 3. For a herbivore, the number is closer to 8. And for Homo sapiens, the number is exactly 8. What does that prove? Wow. Then you look at your claws, here and here. Both do these look like having the capability to catch hold of a deer and rip it open? We can't do that. And you don't feel inclined to do that when you see the deer. Yes, that's the psychic part. That's the psychic part. But Dr. Naik's argument is more on the physical part. And in the physical sense, this is not designed to, in fact, if you grow your nails too long, they actually become a problem. It's not that they will become sharp weapons. You cannot weaponize your nails as animals do. We know of some people, if you refer to the Guinness Book of World Records, we know of people who have grown their nails. But that's actually a problem. That's something that will require huge maintenance. But also they grow and they curl in. Yes, they grow and they curl in. You are not, yes, they'll become a liability. They'll become, whereas if you look at a wolf's claws, the nails are much thicker, much sharper. That's not the way our nails are. These are pretty delicate things, very delicate things. The kind of nail cutters that we have, you cannot use them on carnivores.
Because our nails are just very, very delicate things. Yeah. And also the muscles over here that we have, those muscles are not strong enough to really catch somebody's throat and tear the whole thing apart. That's not the thing. And then the final argument boils down to the biggest organ that we have in our body, the skin. Carnivores in general do not sweat. Yeah, okay. They regulate their temperature through panting. The way that a dog does, a pet dog, the tongue is out and it's trying to have as much water evaporate as possible. And that evaporation through the oral cavity keeps the temperature down. In our case, that evaporation happens via this organ. We sweat and the water evaporates and we have resultant cooling here. Yeah. Everything from here till there, from head to toe, points, it bears testimony that we are not natural carnivores. What, however, is true is that this system can be adapted to meat eating, principally through cooking and through various other means, and through technology, also through economic power. The fact that this species lords over all others has to do with A, knowledge, and B, money. Because we have knowledge and money and technology, therefore we can firstly kill and secondly consume. That's like adapting a simple car to carry a lot of load on the roof. Some people do that, but that's not what cars are built for. You can adapt anything to do anything, but that's an adaptation. That's a suboptimal usage, and that will have its obvious disadvantages. And we are just talking about the body here. When it comes to the mind, as you rightly pointed out in between, that you don't feel like, even if someone were to negate all the physical arguments, I would still say, even if, let's say, you were to come and prove that without having meat, a certain nutritional part would remain deficient, I would say I'm okay with the deficiency. Yeah. That's a psychic thing. That's how we are meant to be inside. I'm all right living with a deficiency. I'm all right with dying relatively young. I'm all right with forfeiting 10 or 15 years of my age. But I'm not all right with killing somebody for my health or taste. That is the inner part. Yeah. But most people may say the inner part is very subjective and therefore we don't concur with that. We don't buy that. Therefore, when it comes to larger gatherings and to people who are relatively unknown to me, I do not talk about the mental or spiritual aspect of it at all. I prefer to talk of the physical, the more gross aspect. Yeah. Because that's what you'll have to agree with. That's not subjective. That's a fact, an objective fact. Yeah. It's factual. Yeah. So you'll have to agree with it. Yeah. So it should work, but I don't think it works as automatically as it should. Yeah. People find ways to bypass even the most direct of arguments. And people find ways to support even the most untenable of arguments. Biases, comforts, habits, good old ego. Yeah. I think, it's very obvious that behaviorally we are omnivorous, which is through culture and tradition. But biologically, science is black and white, okay? Yeah. You can't say ki, oh, ye hai, oh, Yes, it's black and white. Yes. We are biologically herbivorous. It doesn't matter aap kaun se angle se dekho, aap kya dekho, that is what it is. The human body is highly adaptable. So agar aap use meat khilate raho and all this stuff, theek hai, you've increased your chances for cardiovascular issues later on in life, but your body will still manage. It may not thrive, but it'll manage. And that's where I think people get confused. जब वो honestly सोचते हैं क्योंकि उनके family ने बताया है, उनके doctors ने बताया है, उनके लोगों ने, as you were saying कि यहाँ से हमारा बनता है, right, world view.
क्योंकि वो क्रिटिकली थिंक नहीं करते, अपना रिसर्च नहीं करते, अपने आप सोचते नहीं हैं। उनको लगता है कि हाँ मुझे कैल्शियम चाहिए तो मुझे दूध चाहिए, हमें प्रोटीन चाहिए तो हमें मीट चाहिए। वो एक चीज़ को देख रहे हैं। वो ठीक है, प्रोटीन आपको मीट से मिल गया, लेकिन आपको और क्या क्या मिल रहा है मीट से? You're getting this cholesterol, you're getting this fat, you're getting this, you're getting this, you're getting this. Whereas if you get the same protein from where the animal got the protein, which is the plant directly, you're not getting the cholesterol, you're not getting this, you're not getting this, you're increasing the likelihood of your overall health and well-being. Right. So anyway, I find it mind-boggling. But how do you think you even tackle this level of misinformation that is in the world when it comes to what we consume? असल में समस्या जो मूल है, द फंडामेंटल प्रॉब्लम, वो मिस इन्फॉर्मेशन है नहीं। जैसे यही मुद्दा है ना जिस पर हम बात कर रहे हैं, कंजम्पशन ऑफ फ्लैश। इतनी ऑब्वियस सी बात है, छोटे बच्चे को ही पता होता है, इंस्टिंक्टिवली पता होता है कि यार सामने कोई जानवर है, वो मस्त अपना खेल रहा है, कूद रहा है, लैम्ब है, गोट है, काऊ है, कुछ भी है, मुर्गी है, मछली है। किसी की भी पहली इंस्टिंक्ट तो ये होती ही नहीं है कि उसको खा लो। हो सकता है कि आप एक स्टॉन्च मीटिटेरियन फैमिली से हो, तो भी बच्चे की कोई इंस्टिंक्ट नहीं होने वाली कि वहाँ पे अगर मछली है तो मछली निकाल के ऐसे खा जाऊंगा। हमने कभी किसी बच्चे को करते देखा भी नहीं होगा। खेलने का मन है, खेलेगा बल्कि उसके साथ, वो दोस्ती जल्दी कर लेते हैं। और खाने की चीज में उसको ही पता होगा, वो ऐसे देखेगा, कहीं फ्रूट देखेगा तो ऐसे उंगली दिखा देगा कि फ्रूट खाना है। तो मिस इन्फॉर्मेशन की शायद उतनी बात है नहीं। वी ऑलरेडी समवेयर एट द बैक ऑफ माइंड नो कि क्या बात है, असलियत क्या है। और ये जो मार के खाना है, उसका गला कटता है, वो जो खून निकलता है वो बिल्कुल इंसान के खून जैसा होता है। आपको बताया ना जाए और बोला जाए कि ये इंसान का खून है तो आप मान लोगे। तो हमें सबको पता है। जो असली बात है वो ये कि इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज टू लव एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ इंटीग्रिटी टू लिव बाय व्हाट यू नो। आपको पता भी हो ना तो आप डर बहुत जाते हो और आप कहते हो कि जो सब कुछ कर रहे हैं, सभी लोग कर रहे हैं, वो मैं नहीं करूं तो मेरा क्या होगा? It's not just that you are violent towards the animal. It's also that you are insecure towards yourself. एक फैमिली है 5 लोगों की या 8 लोगों की। अब उसमें एक को अगर पता चल भी गई ना सारी बात, साफ साफ आपने बता दी, पता तो ऐसे सबको होती है, पर एक को आपने विथ प्रूफ सारे आर्ग्यूमेंट्स दे दिए, even then that person will find it difficult to declare in front of everybody else in the family that this is the route I am taking. उसकी हिम्मत नहीं पड़ेगी। और समझिए, अगर वो व्यक्ति जो कन्विंस हो गया है, if that happens to be a woman, it's going to be even more difficult. और सुनिए, वो जो व्यक्ति कन्विंस हुआ है, if that person happens to be an unemployed woman with no personal original source of income at all, it's going to be even more difficult. All that points towards the fact that this is not just a matter of misinformation, but it has deep rooted origins in inequality, in power equations, and in the tendency to exploit. Inequality would ensure that you are afraid, and the tendency to exploit means that you want to exploit the other. हम मीट खाएं क्या अगर जो जानवर है वो हमारी जैसा इंटेलिजेंट हो, या कम से कम इतना बड़ा और इतना इंटेलिजेंट हो कि उसका शिकार करना बहुत एक्सपेंसिव हो जाए। इतना एक्सपेंसिव हो जाए कि आप शिकार करने जाओ तो ये पता है कि अगर वैसे 10 एनिमल्स को मारोगे तो 3 ह्यूमन बीइंग्स भी मरेंगे, सारी मीट ईटिंग छूट जाएगी। हमें बहुत अच्छे से पता है कि शिकार बहुत आसानी से हो सकता है। शिकार की भी क्या ज़रूरत है, अब तो उनकी 99% तो उनकी ब्रीडिंग हम खुद ही करते हैं, शिकार की ज़रूरत भी नहीं है। हम खुद ही उनको पैदा करते हैं और खुद ही खा जाते हैं। ये सब हम कर सकते हैं ना, इसलिए कर रहे हैं। तो ले दे के सारी बात ताकत की है, राइट। सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट मिस इन्फॉर्मेशन, क्योंकि इन्फॉर्मेशन वाला रूट ले करके हमने काफ़ी देख लिया। आप किसी को पूरी तरह इन्फॉर्मेशन दे भी दो ना तो बहुत फ़र्क पड़ता नहीं, क्योंकि
किसी न किसी लेवल पर तो उसको पहले थोड़ा बहुत खुद ही पता था कि ये काम है तो गलत ही। असली बात ये है कि सोसाइटी और कल्चर और रिलीजन, इन्होंने हमें ऑप्रेस कर रखा है, और चूंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी का और इकोनॉमी का पावर है, तो फिर हम एनिमल को ऑप्रेस कर रहे हैं। ये जो सारा खेल है, ये एक फ्लो ऑफ वायलेंस है। मैं एक इंडिविजुअल हूँ, ठीक है, और जैसे मैं आपसे कह रहा था कि अगर मैं लेट्स से इफ आई एम अ हाउसवाइफ, अ डिपेंडेंट हाउसवाइफ, ठीक है, मुझे किसने दबा रखा है? मुझे सोसाइटी ने और हैबिट्स ने और कल्चर ने और ट्रेडिशन ने दबा रखा है, मेरे घर वालों ने, कि हम जैसा बोलते हैं तो वैसा खाना बनाएगी। तो आप आई, आपने मुझे बहुत कन्विंस भी कर दिया, मेरी सारी मिस इन्फॉर्मेशन आपने क्लियर कर दी, आपने सारे फैक्ट्स मुझको बता दिए। बट द मोमेंट माई हस्बैंड एंड माई फादर इन लॉ कमांड मी टू बाय एन एनिमल एंड स्लॉटर इट राइट इन द किचन, मैं ऐसा करूँगी। मैं इनसे डरी हुई हूँ, वो मुझ पे वायलेंस कर रहे हैं। ये कौन है? माई हस्बैंड, द एंटायर पैट्रियार्की एंड एवरीथिंग, वो सब मुझ पर वायलेंस कर रहे हैं। तो मैं अब इस पर वायलेंस करूँगी। मैं मुर्गा खरीद के लाई और मैंने मुर्गा किचन में ही स्लॉटर कर दिया। उन्होंने मेरे साथ वायलेंस किया, अब मैं इसके साथ करूँगी। तो ये जो पूरा फ्लो है ना, इसको आप सिर्फ इंफॉर्मेशन दे के ट्रीट नहीं कर सकते। अब मैं वो हाउसवाइफ हूँ, एमी आई और वो मुझे बहुत समझा रही हैं, पूरे फैक्ट्स बता दिए, कैनाइंस से लेके इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन्स, क्लॉज, ट्राइक्रोमेटिक विजन, सब कुछ समझा दिया मुझको। कोई फ़र्क पड़ने वाला है क्या? आप मुझे कितना भी समझा दो, वो जो ऊपर से वो जो बड़ी बड़ी ताकतें हैं, ऑल दोज लाउड एंड डोमिनियरिंग वॉइसेस, वो जब आके मुझे ऑर्डर देंगी ना, किल द एनिमल, मैं उसको वहाँ फिर से स्लॉटर कर दूंगी। आप बात समझ रहे हो? तो ये जो पूरा खेल है ना, ये डर का है। तो इसलिए जो रूट मैंने लिया है, उसमें इंफॉर्मेशन का तो महत्व है ही, ऑब्वियसली द साइंटिफिक फैक्ट दैट वी हैव टू डिसेमिनेट टू पीपल, वो करते हैं। पर उससे कहीं ज़्यादा इफेक्टिव रूट है कि इंसान के भीतर से डर हटा दो और प्रेम जागृत करो। अनलेस यू हैव रियल लव, जस्ट सप्लाइंग समबडी विथ आर्ग्यूमेंट्स एंड फैक्ट्स वोंट सफाइज। बहुत पढ़ा लिखा बंदा हो सकता है, आप उसे सारे आर्ग्यूमेंट दे दो, हो सकता है आप उसे जो आर्ग्यूमेंट दे रहे हो आपसे ज़्यादा उसको पता हो, वो उसके बाद ही बोलेगा, यू नो, आई स्टिल एंजॉय माई स्टीक, आई स्टिल एंजॉय माई स्टीक, डोंट पुट मी ऑफ माई फूड, और यू आर पुटिंग मी ऑफ माई फूड, कम ऑन गेट अवे। वो ये कर देगा। सारे वो हो सकता है खुद साइंटिस्ट हो, वो हो सकता है खुद न्यूट्रिशनिस्ट हो, वो हो सकता है कि खुद कार्डियक सर्जन हो जो अच्छे से जानता है कि ये कहाँ से आती हैं सारी बीमारियाँ, हो सकता है उसे सब पता हो। तो इन्फॉर्मेशन से काम नहीं चलता, नॉलेज अलोन डज नॉट सफाइस। Unless you remove fear from a person's heart and awaken love, this picture won't change. But do you think that the human race is capable of love? And I say this because most people I meet, okay, truly don't give a shit. They don't care. Or they'll say कि नहीं मुझे जानना नहीं है, या please you know ये मुझे पसंद है, you know don't make me feel bad about it, or whatever. I just find that the human race as a whole, हम कोई भी respect में देखें, when it comes to how men treat women, when it comes to how whites have treated blacks in the past, when it comes to our entire civilization's trajectory since our inception on this earth till now, it's all a cyclic thing of us abusing this earth, being selfish, not caring. And I'm wondering, and we were talking about this before, that do you think our entire race is like de-evolving and becoming worse, or are we getting better? As we are, very rightly said, we are not at all capable of any kind of compassion. Yeah. In fact, we'll only deteriorate and take the whole planet down with us, given the way we are. Therefore, a certain kind of psychic rebirth is needed. Wisdom or self-knowledge or pure spirituality is about that inner rebirth. We have to quit the self as it exists, and a different possibility is definitely there. So
as a person is, if you just tell him, killing that cow or that goat is not good, he may not realize the extent to which that thing is affecting him, because we are talking keeping the animal at the center. Yeah. So more and more, I'm not talking of the animal or the forests or the planet anymore. More and more, I'm talking only of his inner self, the person's inner self. And slowly what happens is something a bit magical. The fellow does not even realize that he has dropped meat. Oh, wow. It happens very silently, very subliminally. Dropping happens just as a ripe fruit drops from the tree or a pale leaf drops from the tree. Nobody comes to know. Even the fellow himself does not come to know. Dropping animal products, not just in diet, but also in all kinds of consumption. Dropping violence in general. This needs to be a silent outcome. This cannot be the center of your effort. The center of your effort has to be the person's heart. If you can enable him to put aside all the nonsense, all the needless rubbish, then what remains is necessarily compassionate. Yeah. And then, as I said, without even your realization, you find that so much that was cruel, that has disappeared from your life. And then somebody else someday comes and tells you, my goodness, how is it that you don't like taking milk tea anymore? And the fellow says, is that so? He said, yeah, since almost last 3 months, you are refusing to take milk. And you are taken by surprise. Is that so? Is that so? Am I refusing to take milk? And say, yeah, it happened. Most of the people who are associated with me, my mission, my movement, that is, they are turning vegan very silently. On the contrary, the ones who were pushed to become vegan, converted, so as to say, into veganism, they revert. Yeah. They slip back. They continue under some kind of pressure, force, compulsion for a few months. And then when nobody is watching, one day they consume something silently and experience some guilt. And when the guilt becomes too much to bear, they come out in the open and say, animal products are all right. And anyway, I'm not doing an excess of it. Yeah. A little bit here, a little bit there. I'm a social milk consumer. Yeah. I don't take milk tea when I'm alone, but when I'm in a gathering, if they offer me some milk tea, how do I refuse? So with this kind of specious argument, the thing proceeds, and then it becomes a full-fledged animal milk and flesh affair. So that doesn't work. That doesn't work. On the other hand, the vegetarianism or veganism or compassion that arises from the seed within. You remember the tree we were talking of? Which is an inside-out phenomena. That stays because it is your own. Nobody can take it away. You came to it on your own. It's almost like your baby. You cannot drop it. It's not there. So that's the route that I am taking, and that's also the route I am continuously advising the vegan community to take. Yeah. You cannot have veganism without self-knowledge. You cannot have veganism without essential spirituality. The problem that I face there is that a lot of vegans consider religion as a problem. And I agree. The traditional kind of religion, the popular and observed religion all around us, that is definitely a problem. But not the essence of religiosity. Essential spirituality is just self-knowledge.
I must know who I am, my tendencies, my greeds, my fear, how I operate from within, my desires, where do I want to go, my association with my past and future. That's self-knowledge. And I think there's an important distinction here, is that there is a difference between organized religion and spirituality, which is the self. Which is the self. And the problem is they get lumped in together They a get lot lumped from in atheists, together, yes. but there's a very important distinction there. Yes. And that's the mistake that the atheists make. For them, everything that is not atheistic is about God and beliefs and superstitions. No, spirituality is not about God, not beliefs, not superstitions. Spirituality is about yourself. Yeah. Spirituality is self-knowledge. Going inward. Going inward. Yeah. Just seeing silently what's going on in the mind and wondering, smiling at yourself. Yeah. That's spirituality. Yeah. Now, if that is there, only then true compassion can be there, and such compassion lasts. Yeah. Such compassion is authentic and organic. Whereas when you learn veganism, when you are indoctrinated into it, then that's what it is. Another doctrine, another dogma, another belief system. Yeah. And you can have the vegan kind of bigotry as well. Of course you can. Yeah. And there are so many people who dislike vegans for that purpose. Yeah. I dislike vegans. So do I. I am one. So do I. I avoid them. So do I. They invite me to parties and I'm like, no. Yes. So do I. I mean, you flaunt it almost like a badge of honor. That's just ego. Yeah. And you want to claim a special moral kind of superiority. Yeah. I'm a vegan, holier than thou. That's what all the religionists do. Yeah. So you're turning it into another religion. And that's the thing. It's like, it's your moral baseline. It's literally, it's the baseline to your existence. It's not everything you are. It's a small part of who you are. It forms the basis of your moral compass. Yes. That is it. But I feel like that, because I used to be a non-vegetarian. I've been vegan now for 21 years. And so I used to be a non-vegetarian, and I used to find vegans so off-putting because they would be like, oh, guilt me about why am I not vegan, or you're wrong, you're blah, blah. And so mera aisa impression tha vegans ka ki I'm like, oh, I could never be a vegan. And now ironically I am one. But it's made me realize the power of, one, leading by example. Number two, people need to understand the why. Because the moment your why is clear, there's actually a wonderful book that Simon Sinek, I don't know if you know him, he's written this book called The Power of Why. With anything, in business, in life, the moment aapka why clear hai on anything, nothing can budge you left, right or center. The problem is, agar koi aapko kuch keh raha hai ki ye karo and then you're guilted into doing it, 5 minute liye aap karoge, phir aapko koi kuch aur dikh jayega, you'll do that. Right. The why is not clear. Right. Yeah. See, this is beautifully said, obviously. There is veganism under pressure, as you said. Somebody takes you on a guilt trip and says, you're a murderer, you are responsible for all that bloodshed and all that. Yeah. So you turn a vegan for 5 minutes. Yeah. That's one thing. The next thing is veganism by argumentation. Veganism by the power of reasoning, which is a wonderful thing. But what I have seen is that even this has limits. What is everlasting is silent veganism. Veganism through understanding. That's a little higher than even veganism through reasoning. Because you see, if I were to be a vegan for a reason, what if the reason becomes invalid someday? What if it some new medical रिसर्च comes in, हेल्थ को लेके जस्ट एज अभी एक रिसर्च आई जिसने कहा कि बहुत सारे ऐसे फूड वेजिटेबल प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें सारे 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं. साइंस तो मूव करता रहता है, कल आ गई उन्होंने कहा नहीं 9 नहीं होते 8 होते हैं और एक के लिए तो कुछ एनिमल प्रोडक्ट लेना पड़ेगा. तो ये तो हमें रीज़न गड़बड़ मिल गया ना. द ओल्ड रीजन्स हैव ड्रॉप्ड, रीजन्स कैन चेंज. कैन आई हैव समथिंग बियॉन्ड रीजन्स that will enable me to stick to non-violence, to love, to compassion, even at the cost of whatever, even at the cost of my life, let's say. कुछ वैसा हो सकता है क्या? जब वैसा कुछ होता है ना, तो फिर जैसे हम बोलते हैं ना,
नॉर्थ में कि रीजंस गए तेल लेने, मुझे कोई रीज़न नहीं चाहिए, मुझे समझाओ मत, मैं हूँ, मैं दिल से हूँ, मैं दिल से हूँ, और आप रीजंस का मेरे को पूरा जो बास्केट हो दे दीजिए ताकि मैं दूसरे को समझाने का इनिशिएशन कर सकूं। वो इनिशिएशन के लिए अच्छा है, पर अगर उसको परमानेंसी देनी है तो परमानेंसी तो हार्ट से ही आती है। हार्ट नॉट एज द सीट ऑफ इमोशंस बट एज द सीट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। कि उसको कुछ बात बहुत क्लिक कर गई, उसको ये नहीं क्लिक किया है कि मुर्गे को मारा तो कुछ मुर्गे के साथ गलत कर दिया। उसको ये क्लिक कर गया है कि मुर्गे को मारना ना मेरे छोटे बच्चे के साथ गलत है, मुर्गे को मारना मेरे हस्बैंड वाइफ के साथ गलत है, और अंततः मुर्गे को मारना मेरे अपने साथ गलत है। Now it's not just about that, it's about the entire universe with you at the center. सबके साथ गलत है और मेरे साथ गलत है, तो unthinkable, unimaginable हो गया। मैं उसको मार ही नहीं रहा। I'm seeing some kind of commonness between that bird and this body. उसको मारने का मतलब होगा कुछ हद तक खुद को मारना। अभी ये सब बातें थोड़ी सी ऐसी फ्लफी सी लग रही होंगी शायद हवा की, लेकिन यही वो बातें हैं जो जब भीतर एकदम चमकने लग जाती हैं तो उसके बाद इम्पॉसिबल हो जाता है एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट कैसा भी वायलेंस करना। मैं इम्प्लिसिट वायलेंस क्या बोल रहा हूँ? मैं इम्प्लिसिट वायलेंस ये कि लेट्स से अब हमें मालूम है वीगनिज्म इज़ अबाउट एनिमल्स, राइट? इट कीप्स देम एट द सेंटर। अब एनिमल्स के साथ क्रूअलिटी सिर्फ ये तो नहीं होती ना कि उनका फर ले लिया या उनको बीस्ट ऑफ बर्डन की तरह इस्तेमाल कर लिया या कि उनका मीट ले लिया या मिल्क ले लिया, सिर्फ यही तो क्रूअलिटी नहीं होती ना। सबसे बड़ी क्रूअलिटी तो यही है कि उनकी स्पीशीज़ ही एक्सटिंक्ट हो जाए। अब हमको पता है बहुत अच्छे से कि हर दिन 100 से 1000 स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट होती हैं, और जो एक्सटिंक्ट होती हैं उसमें से 99% वो हैं हम जिनसे मीट मिल्क फर कुछ भी नहीं लेते। सबसे बड़ी क्रूएलिटी तो ये है कि कोई स्पीशीज़ ही एक्सटिंक्ट हो जाए, और एक्सटिंक्शन इसलिए नहीं हो रहा कि हमें उनका लेदर चाहिए, कि फर चाहिए, कि हमें उनका मीट चाहिए, ब्लड चाहिए, नहीं। एक्सटिंक्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि हम एक पर्टिकुलर लाइफस्टाइल जीते हैं। तो वीगन होने का सबसे पहले तो ये मतलब होना चाहिए ना कि मैं अपनी लाइफस्टाइल बदलूं। भाई हम कहते हैं कि जिन जानवरों को हम मार रहे हैं हम बचा देंगे। हमें बहुत अच्छे से पता है कि सबसे ज़्यादा जो जानवर खाए जाते हैं वो कौन से हैं, ठीक है ना। हमें पता है कि सबसे ज़्यादा तो फिश होती हैं, फिर ये सब आपका जो कैटल है वो आ जाता है, इसमें काओ, बफेलो, लैम, गोट, ये सब आ जाता है। चिकन ऑब्वियसली सब चिकन है, फिर उसमें बतख आ जाती है, फिर थोड़ा सा रैबिट आ जाता है, फिर पिग्स कैसे भूल गए ये सब। तो ये पूरी जो आप लिस्ट भी ले लोगे, ये पूरी लिस्ट 20 जानवरों से ज़्यादा की तो नहीं है। लेकिन ये जो 20 हैं ये तो एक्सटिंक्ट भी नहीं हो रहे, ये तो सबसे ज़्यादा है पृथ्वी पर, हम ही ने इतना पैदा कर रखा है। सबसे बड़ी क्रूएल्टी तो ये है कि डेली 100 से 1000 स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो रही हैं। जो एक्सटिंक्ट हो रही हैं वो इसलिए नहीं हो रही हैं एक्सटिंक्ट कि हम उन्हें खा रहे हैं, वो सबसे बड़ी क्रूएल्टी है। और उसका संबंध खाने पीने से नहीं है, उसका संबंध हमारी लाइफस्टाइल से है। द वे आवर लाइफस्टाइल्स आर, फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव अ वीगन who is on his way to get his third kid, to hell with his veganism. क्योंकि ओवर पॉपुलेशन बिगेस्ट रीजन है बायोडाइवर्सिटी डिप्लीशन का और एक्सटिंक्शन का। आप बहुत बड़े वीगन हो, आप सिर्फ वीगन नहीं हो, आप डाई हार्ड एक्टिविस्ट हो, आप पूरी दुनिया को वीगन बना रहे हो, पर 3 बच्चे आप खुद करके बैठे हो और किसी का बच्चा होता है, आप बोलते हो कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो ये कौन सा वीगनिज्म है? So that's why I'm saying that more fundamental transformation has to come at the level of understanding who you are and what you are doing. As long as we have unabated, unbridled desires running amok, no kind of veganism is going to suffice. क्योंकि fundamental reason मैं किसी मुर्गे को क्यों मारता हूँ, क्योंकि मेरे पास desire है जो बोलती है भैया मुझे किसी भी कीमत पे पूरा होना है ना, self gratification at all costs. As long as that doctrine stands its place, तो मैं ऊपर से कोई भी प्रिंसिपल अडॉप्ट कर लूँ, भीतर ही भीतर आई एम द डिजायरस एंड द वायलेंट वन, एंड दैट वायलेंस विल रिजल्ट इन ऑल काइंड्स ऑफ कैटास्ट्रॉफी। अब ये भी हम जानते हैं कि बायोडाइवर्सिटी एक्सटिंक्शन, एनिमल्स के साथ जो टॉर्चर होता है, और क्लाइमेट चेंज, इनका बहुत आपस में गहरा रिश्ता है। हम ये भी जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज के 2 फंडामेंटल रीजंस हैं, पॉपुलेशन और पर कैपिटा कंजम्पशन।
तो एनिमल्स के लिए भी अगर हमको वायलेंस रोकना है तो सबसे पहले तो क्या हमको इन दो चीज़ों पे रोक नहीं लगानी चाहिए? और उसके लिए तो हमें अपने आप को समझना पड़ेगा थोड़ा कि भाई मैं शादी करने की तरफ भाग रहा हूँ. इट मस्ट बी समथिंग स्ट्रेंज कि वीगनिज्म के डिस्कशन में शादी कहाँ से आ गई. बट फ्रॉम वेयर आई एम लुकिंग एट इट एंड फ्रॉम वेयर आई हैव बीन स्टडीइंग इट सिंस लॉन्ग, देयर इज अ डीप रिलेशन. मैं शादी करने की तरफ भाग रहा हूँ. क्यों भाग रहे हो? मुझे उसी पर्टिकुलर फेवरेट रेस्टोरेंट में खाना है. अच्छा क्यों खाना? बट पूछ लो, मना नहीं कर रहे. बट व्हाई नॉट जस्ट इंट्रोस्पेक्ट फॉर अ व्हाइल? आई वांट किड्स, यू नो. लॉट ऑफ वीगन्स आर इमोशनल वीगन्स, आर दे नॉट? मुझे वो इतना क्यूट है, उसको क्यों हर्ट कर रहे हो, उसे मत मारो मत मारो. अ लॉट ऑफ लिटरेचर in the surface of veganism is founded on emotional grounds. They try to awaken the emotional center in the reader or the watcher कि देखो ये कितना बुरा हो रहा है, उसको मार रहे हो. But is it not the same emotionalism that makes you produce babies after babies? और वो जो आप बेबी वाला फैक्ट्री चला रहे हो, उसी बेबी से सारी बायोडाइवर्सिटी मर गई, सारे एनिमल्स नहीं मरे, उनकी पूरी स्पीशीज मर गई. तो इमोशन अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ है? अगर सारा वीगनिज्म इमोशनल ग्राउंड पर है तो वो वीगनिज्म किसी काम का है क्या? हेंस आई वांट टू टेक इट बियॉन्ड इमोशन एंड बियॉन्ड रीजन टू द प्लेस इट रियली मस्ट कम फ्रॉम, which is the spiritual center, the heart. Yeah. I'm not sure I'm making much sense No, to those. No, obviously you are getting it, but those who might be hearing to me for the first time, they might find it a little over the top, but that's okay. I mean, okay, if we break it down, तो मेरा ऐसा मानना है कि दुनिया में इतने सारे बच्चे हैं, okay, ऑलरेडी इतना ओवर पॉपुलेटेड है दुनिया, ऊपर से इतने सारे बच्चे हैं जिनके पास घर नहीं है. तो अगर आप, हमारा नेचुरल ट्रेट है कि हमें फैमिली, आई मीन वे कम्युनिटी क्रीचर्स, हमें फैमिली चाहिए, हमें यू नो ये सब चाहिए, लवली. बट अगर आप क्रिटिकली थिंक करते हो, अगर आप ऑलरेडी लेट्स से वीगन हो, आप ऑलरेडी सोचते हो इतनी अच्छी चीज़ें, तो क्या आप इतना नहीं सोच सकते अपने ईगो को हटा के? क्योंकि जब हम सोचते हैं कि बच्चा क्यों लोग पैदा कर रहे हैं, इट्स फॉर ईगो, दैट्स इट, कि लगेगा कैसे, कितना अच्छा होगा, राइट? व्हाई कैन यू नॉट अडॉप्ट अ चाइल्ड? बिकॉज यू नो, अभी मेरा कुछ बात चल रहा था फ्रेंड के साथ, और मैंने उनसे कहा कि मुझे अडॉप्ट करना है बच्चा, और वो हमसे कह रहे थे, अरे एमी तुम्हारे बच्चे कितने सुंदर होंगे. आई एम लाइक, सो लाइक व्हाई डू आई केयर व्हाट द चाइल्ड लुक्स लाइक? I care that I can still be a mother, I can, you know, have fun with my kid, I can teach them something, कुछ किसी को सिखा दिया, lovely. लेकिन someone जो already जिसके पास घर नहीं है, जिसको opportunity हम दे रहे हैं, जिनको normally नहीं मिलेगा, you know, and then people turn around and say कि एमी ये कितना selfish है, you're not letting your seed continue. And in my mind, I'm like, that is so selfish. Or people say that is so selfish to me. Yes. So we see that it is these very primitive and very animalistic instincts that are at the root of all kinds of violence. You know, the instinct to have your seed continue in time, मेरा वंश, मेरी धरोहर, मेरा नाम. Let me talk of a few more very primitive instincts. The territorial instinct, for example. बहुत पुरानी है ना. We see what dogs do. They mark their territory using their urine. That's what they are targeting, the vehicles and the tires for all the time, and the lampposts. Think of the two major wars we are having on this planet this moment. Russia, Ukraine, and the one in Middle East. इनके रूट में क्या है? इनके रूट में टेरिटोरियल इंस्टिंक्ट है, बेलिजरेंट नेशनलिज्म है, और एकदम ब्लाइंड रिलीजियोसिटी है. यही तीन चीज़ें हैं ना. Now let me add another piece of data to it. 15 days of a full-fledged war releases as much carbon into the atmosphere as an entire year of industrial activity does. Wow. Referring to the same nation. सेम नेशन. और हमें ये भी पता है कि क्लाइमेट चेंज से कितना ज़बरदस्त बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है, माने क्रूअल्टी टुवर्ड्स नॉट जस्ट एनिमल्स, ऑल फ्लोरा एंड फौना. जिसको मैं बोलूँगा कि ये तो मेरी प्रिमिटिव रिलीजियोसिटी है, या मेरी टेरिटोरियलिटी है, हाँ, या मेरा वो वाला नेशनलिज्म है ज़बरदस्त वाला, वो खुद अपने आप में एनिमल्स के प्रति ज़बरदस्त वायलेंस है. आप कहीं पे जाके बॉम्बिंग कर देते हो
आप कभी ये गिनते हो क्या उससे पशु पक्षी कितने मरे? When a nation bombs the other, do we ever count कि, और पशु पक्षी नहीं, वो वहाँ ज़मीन पे गिरा, तो ज़मीन पर जो कुछ था, ऑल द छोटा मोटा अंदर ज़मीन के नीचे भी रहते हैं, उनका क्या हुआ? इतने नहीं, वो ज़मीन हमेशा के लिए अब उनके लिए इनफर्टाइल हो गई, वो उस पर कभी नहीं आ सकते। हम उस पर काउंट भी करते हैं तो यही कि कितने ह्यूमंस मरे और उससे कितना कार्बन रिलीज हुआ एटमॉस्फेयर में, ये तो हम कभी काउंट करते ही नहीं है। और बायोडाइवर्सिटी डिप्लीशन, मतलब जिसमें ये नहीं कि इनकी संख्या कम हो गई, टाइगर्स थोड़े से कम हो जाते हैं, हम कहते हैं सेव द टाइगर। यहाँ हम कह रहे हैं पूरी स्पीशीज़ ही गायब हो गई। रोज़ 100 से 1000 स्पीशीज़ हमेशा के लिए इस पृथ्वी से गायब हो रही हैं, और उसका कारण हम हैं और हम उसकी परवाह नहीं करना चाहते। लेकिन हम कहते हैं हम एक डॉग लवर हैं, और हम जाके स्ट्रीट डॉग को थोड़ा सा पानी दे देते हैं, थोड़ा सा रोटी दे देते हैं, हम सोचते हैं कि हमने अपना काम कर लिया, और फिर जाके चिकन खाया, और फिर जाके चिकन भी खा लेते हैं। मैं कह रहा हूँ चिकन नहीं भी खाया, अगर आप सिर्फ स्ट्रीट डॉग को वहाँ पे जा कर के पानी दे देते हो, रोटी दे देते हो, और उसके बाद आकर कहते हो कि बहुत अच्छी सी बात है, ये इजराइल और हमास या हिजबुल्लाह में जो हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है, लड़ाई और होनी चाहिए, तो आप एनिमल लवर हो क्या? वहाँ पे मिडिल ईस्ट में या यूक्रेन में जो हो रहा है, उसी के कारण इतना ज़्यादा कार्बन रिलीज हो रहा है कि इतनी सारी स्पीशीज़ के जो एक्सटिंक्शन है वो एक्सेलरेट हो गया। लेकिन आप कुत्ते को रोटी देख के सोचते हो, और फिर अंदर जाते हो और आप वहाँ पे इंस्टाग्राम पे या ट्विटर पे जा करके वॉर मॉन्गर बन जाते हो। अब आप एनिमल लवर किस तरीके से हो ये बता दो। तो वो जब तक जो सेंटर में ही वो जो बहुत पुराना जानवर बैठा हुआ है ना हमारे यहाँ पे, दैट जानवर उस सेंस में नहीं जैसे मुर्गा या बकरा होता है, इन द सेंस ऑफ बीस्टली इंस्टिंक्ट्स, जब तक हम उसको ठीक नहीं करते तब तक बाहर से किसी तरह की मोरालिटी ले लेना वो बहुत दूर तक जाएगा नहीं। अब उदाहरण के लिए, आई एम अ बिग फैन ऑफ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, मेरे को जाकर के दूसरे ग्रह को पॉपुलेट करना है, लेट्स कॉलोनाइज द अदर प्लैनेट्स, जैसे होता है ना कि लेट्स हमारा जो बीज है, हमारा सीड है, वहाँ पे पूरी तरह फैलना चाहिए। वैसे ये आर्गुमेंट उसके लिए भी दिया जाता है कि वाई शुड द ह्यूमन सीड बी प्रेजेंट ओनली वन स्मॉल प्लैनेट इन द एंटायर कॉस्मोस, लेट्स टेक इट टू द अदर प्लेसेस पॉसिबल, हर जगह लेके अदर गैलेक्सीज, हर जगह इसको जा करके स्प्रिंकलिंग करो अपने सीड की। अच्छा ठीक है, आप जब उस टेक्नोलॉजी वर्शिपर और ये सब करना चाहते हो, द मोर यू से आई वांट टू माइग्रेट टू द अदर प्लैनेट्स, द मोर वायलेंट एंड इंडिफरेंट यू बिकम टूवर्ड्स दिस प्लैनेट। और उसमें वो जो इंडिफरेंस है, आप गौर करिएगा, वो सिर्फ जानवरों की तरफ नहीं है, वो हर ऑप्रेस्ड सेक्शन की ओर है। इसीलिए मैंने कहा था कि यू कैन ऑल्सो लुक एट इट एज अ पावर इक्वेशन विद द ईगो एट द सेंटर। आप जब माइग्रेट करने की सोचते हो तो आप ये थोड़ी बोलते हो कि यहाँ का सारा बायोडाइवर्सिटी भी अपने साथ लेके जाऊँगा। सारा बायोडाइवर्सिटी छोड़ दो, जो यहाँ कमज़ोर और गरीब लोग हैं उनको तो आप यहीं वापस छोड़ के जाओगे ना। ये सब वायलेंस है। तो टेक्नोलॉजी की तरफ भी जो आपकी रेवरेंस है, उसमें इम्प्लिसिट वायलेंस छुपा हुआ है। आप कहते हो टेक्नोलॉजी को यूज़ करके मैं तो आगे निकल जाऊँगा। अच्छा, वो जो अर्थवर्म है या जो एलिफेंट है या जो व्हेल है, उसको भी मार्स लेके जाओगे क्या? तुमने उसके लिए तो एक प्लैनेट डिवास्टेट कर दिया, बिल्कुल तबाह कर दिया। खुद तुम भागना चाहते हो और जितने गरीब हैं उनको भी छोड़ के जाओगे। दे कैन नॉट अफोर्ड द कॉस्ट ऑफ इंटरप्लैनेटरी ट्रैवल। तो ऑल दैट इज रूटेड इन द सेल्फिशनेस विद इन। वही जो पुरानी सी बात है कि अपना सा देख लेना और कुछ नहीं देखना है, एंड दैट डिस्क्वालिफाइज यू फ्रॉम इवन बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, लेट अलोन अ गुड ह्यूमन बीइंग। उसका इलाज तो सेल्फ नॉलेज ही है। और जो पूरी वीगन कम्युनिटी है उसमें मैं बार बार बोलता हूँ कि यार तुमको ये जो कर रहे हो बहुत अच्छा काम है, पर ये सचमुच अगर करना चाहते हो तो वाई नॉट स्ट्राइक डीपर रूट्स, वाई नॉट एनेबल पीपल टू रीच अ पॉइंट वेयर वेगनिज्म बिकम्स एन ऑर्गेनिक थिंग। आप उसको ऊपर से एक आइडियोलॉजी या एक डॉक्ट्रिन की तरह डालना चाहते हो, कुछ हद तक आपको सक्सेस मिल भी जाएगी, लेकिन उतनी नहीं मिलेगी जितनी आज के क्रिटिकल आवर में चाहिए। We know where the doomsday clock stands today. तो आज का इतना टाइम है कि तुम लोगों को बस रीजन और डॉक्ट्रीन बताते रहो। Why not effect a change in the center, the heart itself? Of course. They're not listening to me, but I'm trying. Let's see how it. So आपने एक कोट कहा था, ओके नाउ आई एम सॉरी, ये हिंदी में लिखा है, मेरा हिंदी पढ़ना उतना अच्छा नहीं है, तो apologies if I get it incorrect. आपने कहा था अपने प्रति हिंसा है मांसाहार, करेक्ट? राइट। तो आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसका क्या है मतलब?
सफ़र कौन करता है? मैं सफ़र करता हूँ ना। मैं क्यों सफ़र करता हूँ? कोई एक्सटर्नल रीज़न थोड़ी होता है। मैं जैसा हूँ मैं उसी कारण सफ़र करता हूँ। दो वी लाइक टू पुट द ब्लेम ऑन अदर्स एंड सिचुएशंस एंड सच थिंग्स एंड द पास्ट एंड द गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड द नेबर एंड द वाइफ, इनकी वजह से सफ़र कर रहा हूँ। सफ़र तो मैं खुद की वजह से ही करता हूँ। मैं जो हूँ मैं उसी की वजह से सफ़र करता हूँ, और मैं जो हूँ उसी की वजह से मैं जा कर के मुर्गा काट देता हूँ। मी रिमेनिंग हु आई एम, I will remain opportunistic, wicked, both exploited and exploitative, and that is where my suffering lies. तो आप जो मांसाहार कर रहे हो उसमें बस ये नहीं है कि आप किसी दूसरे को काट रहे हो। एक से मैंने बोला था, एक बार मैंने कहा था मुर्गा तो गया, अब तेरा क्या होगा? जो तूने अभी उसको काटा है और तो उसके पंख नोच रहा था, और कटने से ठीक पहले वो बहुत ज़ोर से चिल्लाया था। मैं 7th में था, लखनऊ। used to return to my place. महानगर में मेरा स्कूल था। That's a place, a locality, महानगर ब्रांच। वहाँ पे स्कूल था और वहाँ से मैं आता था। अलीगंज में घर था, तो बीच में इससे निकलते थे। वहाँ पे बहुत सारी कसाईयों की दुकानें थी खुले में। वो इलीगल होता है पर चलता है। तो 3-4 बार हुआ मैं खड़ा हो जाता था रोड के उस पार दुकान में, देखता था एक कस्टमर आता है, वो उसमें से मुर्गी को निकालता है और सबके सामने ही वो बहुत ज़ोर से मरने से पहले चिल्लाती है, बहुत ज़्यादा। और जब वो उसकी ओर जाता है ना, उन्हें सबको पता चल जाता है जितनी होती हैं कि ये कस्टमर आया है। उनको ये पैटर्न उन्होंने डिटेक्ट कर लिया होता है। तो वो एकदम अधमरी पड़ी होती हैं, पर जब वो आ रहा होता है उनके पिंजड़े की ओर तो बहुत ज़ोर से फड़फड़ाती हैं। फिर वो एक को उठाता है, उसको लेके जाता है और बहुत उसकी आखिरी छटपटाहट होती है, बहुत ज़ोर की होती है। मैं उसको देखता था, एकदम मैं एकदम सुन्न पड़ जाता था, नम, और मैं खड़ा देखता रहता था। और फिर ऐसे ऐसे होता है, एक जो उसकी पूरी जो उसका आर्तनाद होता है, जो कैकोफनी है, वो ऐसे एक पीक पे पहुंचती है और फिर साइलेंस, वो मर गया। और फिर वो उसके नोचता था। तो ऐसे ही एक दिन कल मैंने कहा वो तो साइलेंट हो गया। मैंने कहा लेकिन ये जो खड़ा था ना, ये कभी साइलेंट नहीं हो पाएगा, इसको कभी साइलेंस नहीं मिलेगा। तुम उसके साथ क्या कर रहे हो? तुम देखो तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। अब बस तुम अपने लिए ही इतने ज़्यादा इनसेंसिटिव हो गए हो ना। जैसे तुम्हें कोई सेंसिटिविटी नहीं थी उसकी चीख सुन के, वैसे ही तुम्हें अब अपने भीतर जो चीख है उनके लिए कोई सेंसिटिविटी नहीं है, तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी नर्क बन जाएगी इन एज मैनी वेज एज पॉसिबल। एंड दैट इंटरनल हेल इज़ वॉट इज़ बीइंग रिफ्लेक्टेड इन द परवर्स स्टेट ऑफ द एंटायर प्लैनेट टुडे। ठीक है, आज हम टेक्नोलॉजी में हिस्टोरिकली पीक पर हैं, इकोनॉमिकली हम आज बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस हैं, हिस्ट्री में कभी इतना नहीं था। पर आज हम एक्सटिंक्शन के जिस खतरे पर खड़े हैं, हिस्ट्री में कभी वो खतरा भी नहीं था। और सारी टेक्नोलॉजी, सारी प्रॉस्पेरिटी भाड़ में गई अगर एक्सटिंक्शन हो रहा है तो। जब आप बचोगे नहीं तो टेक्नोलॉजी किसके लिए? आज ये जो मेंटल डिजीज़ का एपिडेमिक है जितना है, उतना हिस्ट्री में कभी भी नहीं था। आज पॉपुलेशन जितनी उतनी कभी नहीं थी दुनिया में। आज जितनी कम स्पीशीज़ बच रही हैं उतना कभी नहीं था। और आज पूरी दुनिया में जितनी भी स्पेशली जो लैंड वाली स्पीशीज़ हैं, वो जितनी ज़्यादा डोमिनेटेड है कुछ पर्टिकुलर स्पीशीज़ द्वारा, वो भी कभी नहीं था। तो तुम क्या करोगे अपनी इकोनॉमिक्स और टेक्नोलॉजी रख करके? ठीक है, तुमने जिनको मार दिया उनको मार दिया, बट यू विल हैव टू सफ़र दिस हेल नाउ। That's what I wanted to communicate through that line. किसी ने हमसे कहा था कि वो अंडरस्टैंड करते हैं कि चिकन खाना बुरा मान लो क्योंकि आप जानवर को मार रहे हो, ठीक है, लेकिन अगर आप दूध पी रहे हो, देन कृष्णा भी दूध पीते थे, और इसमें क्या खराबी है अगर हम दूध पी रहे हैं? You see, to say something as a fact about someone, you need to have indisputable factual records. No? A story, a biography or a hagiography or a Puranic record is very different from a philosophical discourse.
the stories that you have about Sri Krishna, they are totally in a different dimension from the philosophical work called the Bhagavad Gita. The Bhagavad Gita does not come from imagination. It is presenting a thesis to you. Yeah. So that is what is to be taken as the de facto Sri Krishna. Yeah. All else is just storytelling. And there is nothing wrong with storytelling provided there is factual evidence and recording to back it up. We very well know when the Bhagavad Puran and later the Harivansh Puran, they came up. 8th 10th century AD की बात है वो. भगवद गीता BC में है 8th 10th century या एटलीस्ट 4th 5th century एटलीस्ट. और ये भगवद गीता से कम 1000 साल बाद के हैं. Yeah. To what extent if I die today or you die today or someone, one of us, और आज से 1500 साल बाद कोई हमारी कहानी लिखे, तो मतलब ठीक है, we can learn from that story, but the story is a story. Yeah. Story is a story. The Bhagavad Gita is a different thing altogether. It's a masterpiece. It's a work in philosophy. उसमें तो उसकी डेटिंग अगर नहीं भी हो पाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता. भाई एक फिलोसॉफिकल बात आपको बताई गई, हो सकता है वो कल लिखी गई हो सकता है वो 40,000 साल पहले लिखी गई हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. उसमें जो है जिंदगी के बारे में कुछ ट्रुथ्स हैं, वो कब बताए गए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसमें कोई फैक्ट जैसी बात नहीं है. तो श्री कृष्ण से हमें क्या लेना है, गीता या ये दूध दही मक्खन वाला काम? ये तो हमारी नीयत पर है ना. इफ यू वांट टू लर्न लाइफ फ्रॉम श्री कृष्ण, ही इज सच अ ग्रेट मास्टर. Whereas most people just don't care for the Gita. What they care for is these folklores. Yeah. वहाँ से selectively वो ये उठा लेते हैं कि दूध पीते. अच्छा ठीक है, तुम्हें दूध उठाना है तो तुम ये भी उठाओ फिर कि उन्होंने अकेले जाके इतने राक्षस मार दिए थे. तो फिर तुम ये भी उठाओ कि उन्होंने इस उंगली पे गोवर्धन पर्वत उठा लिया था. उन्होंने तो ये सब भी किया था ना. तुम वो सब क्यों नहीं करके दिखाते? तुम ये भी तो फिर करके दिखाओ कि अगर वो दूध पीते थे तो फिर वो गीताकार भी बन पाए. उन्होंने तो गीता बता दी, तुमको तो गीता समझ में भी नहीं आती और तुम चले हो श्री कृष्ण से अपनी तुलना करने. ये कितना बड़ा अहंकार है कि श्री कृष्ण दूध पीते थे, इसको मैं जस्टिफिकेशन बना कर खुद भी दूध पीऊंगा. तो जस्टिफिकेशन बनाना है तो पूरा बनाओ ना. वो तो फिर पता नहीं क्या क्या करा उन्होंने, कैसे कैसे काम करे अपनी जिंदगी में. तुम सब करके दिखाओ ना अगर हिम्मत है तो. लेकिन नहीं, स्वार्थवश बस वो हिस्सा उठाना है जिसमें हमारी कामनाओं और वासनाओं को तृप्ति मिलती है. Exactly right. बस इतना है. Exactly right. And this is my concern with cherry picking a story and using it to justify modern day decisions when हम जानते हैं, मतलब I think लोगों के माइंड में है कि दूध पीना is so nice, कृष्णा ने किया, गाय का सेवा हो रहा है, all of that, but they're not realizing that it's actually violence against cows. It is violence against animals in Also, the you have environment. to- They're artificially inseminating. Yes. They're killing the babies. Yes, The yes. whole process is cruel. And was all this happening in Krishna's time? Exactly. जब वो अगर अब वो देखिए एक ग्वालों के समुदाय में उनका लालन पोषण हो रहा है, बड़े हो रहे हैं, वो बच्चे हैं. बाल कृष्ण को हम कहते हैं ना कि मक्खन खाते थे, बाल कृष्ण. तो जैसे आपका आसपास का माहौल है, चलिए माना वो खाते थे. पहली बात, वो बच्चे थे तब, और बच्चा तो वही करेगा जो आसपास के लोग कर रहे हैं, जैसा समुदाय और माहौल है. कृष्ण जब बड़े हो गए तो क्या गीता में भी यही कह रहे हैं कि मक्खन खाओ? बच्चे थे तो खाते थे क्योंकि माहौल ऐसा था. क्या गीता इस बारे में है कि मक्खन खाया करो? ये पहली बात. दूसरी बात, जब श्री कृष्ण मक्खन खाते थे तब क्या गायों के साथ वो दुर्व्यवहार होता था जो आज की डेयरी इंडस्ट्री करती है? क्या वही माहौल था? Exactly. जो यहाँ इंडिया के जो डेयरी काउज या बफलोज जो हैं, they end up in slaughter. That is just a basic fact. मैं पढ़ रही थी कि इंडिया is now the second largest exporter of beef and leather in the world. अब ये गाय और बफलो आ कहाँ से रहे हैं? ये डेयरी इंडस्ट्री से आ रहे हैं. जिनका हम दूध पीते हैं, कल उन्हीं का मांस खाया जाता है. Correct. सीधी सी बात बस ये है. That's it. आप दूध पी रहे हो, आप दूध पी करके मांस को सब्सिडाइज कर रहे हो. तो वेजिटेरियन कैसे हुआ फिर? और जो मांस खा रहा है उसको सस्ता मांस मिली इसीलिए रहा है क्योंकि वो जो एसेट है काउ, उसका 2 तरीके से मोनेटाइजेशन हो रहा है. प्रिंसिपली 2 तरीके से, मिल्क
एंड मीट, फिर उसमें लेदर वगैरह भी आता है, फिर उसके और भी कुछ पार्ट्स हैं, हम तो सब कुछ ही निकाल लेते हैं ना जानवर का। तो कई तरीके से उस एसेट से मोनेटाइजेबल चीज़ें निकाली जाती हैं, और हर चीज़ जो निकाली जा रही है दूसरी चीज़ को सब्सिडाइज कर रही है। अगर दूध ना पिया जाए तो बीफ इतना महंगा हो जाएगा कि ये एक्सपोर्ट वगैरह काम इंडिया कर ही नहीं पाएगा। ये जो इंडिया इतना बीफ एक्सपोर्ट करता है, मान लीजिए गाय का नहीं है, भैंस का है, ये भी मान लीजिए, तो भी वो जो इतना एक्सपोर्ट होता है वो इसीलिए होता है क्योंकि इतना ज़्यादा दूध पिया जाता है। ये बात हम समझ नहीं रहे हैं, और हम अपने आप को धार्मिक बोलते हैं। So I wanted to ask you a question a little left of field. I know today we've been talking a lot about veganism and ethics, but something that's been on my mind a little recently is that मैंने एक fact पढ़ा था जब उस डॉक्टर का जो रेप हुआ था recently कोलकाता। हाँ, मैंने फिर पढ़ा था कि every 16 minutes a woman is raped in India. Yes. मैं जानना चाहती हूँ कि ये क्यों हो रहा है इंडिया में? See, there are two things. One, there are desires. Secondly, there is a lot of hypocritical and moral suppression of desire. दो स्थितियां होती हैं अच्छी। पहली तो ये कि आपके भीतर जो वो सीड है, जिसको ईगो बोलिए या प्लेस ऑफ डार्कनेस बोलिए, जो जन्म के साथ ही रहता है, वी आर कमिंग वेरी फ्रेशली फ्रॉम द जंगल, तो वो जो चीज़ है जो कि एक्सप्लॉयटेटिव है, नॉट जस्ट इन सेक्सुअल मैटर्स, इन ऑल मैटर्स ऑफ लाइफ। आप जब रेप भी करने आते हो तो रेप किनका होता है? जो कमज़ोर होती है महिलाएं, उनका होता है। कोई बहुत पावरफुल लेडी है, उसका रेप थोड़ी होगा। तो ले दे के ही एक्सप्लॉयटेशन और ऑपरेशन ही है। जानवर कमज़ोर है तो जानवर को मार दो, औरत कमज़ोर है तो उस पर चढ़ बैठो, उसका रेप कर दो। तो ये है तो सारा वही भीतर से। कोई मुझसे पावरफुल है तो मैं उससे एक्सप्लॉइट होने को तैयार हो जाता हूँ, जो मुझसे कम पावरफुल है मैं उसका एक्सप्लॉइटेशन कर रहा हूँ। जो हम बात पहले कर रहे थे कि हर वायलेंट एक्ट कनेक्टेड है, बेसिकली सब वायलेंट एक्ट एक दूसरे से बिल्कुल कनेक्टेड है। तो एक तो भीतर जो वो ईगो जो होती है ना, वो डरी हुई होती है, और जो डरी हुई चीज़ है वो वायलेंट होती ही होती है। फियर और एग्रेशन हमेशा एक साथ चलते हैं। तो वो जो सेंटर है भीतर, ईगो वाला पॉइंट ऑफ डार्कनेस, हमारी एजुकेशन और हमारी अपब्रिंगिंग उसको एड्रेस नहीं करती, तो वो रह जाता है। So you're saying that the issue is around men. I'm going to say men because usually men are the perpetrators for the most part, not all, most. The issue is that men are repressed sexually from a young age? No, not that's the second part. The first part is that even keeping the issue of just rape aside, the point of darkness from which all kinds of perversions emanate, उसको हम एड्रेस ही नहीं करते, क्योंकि हमारी एजुकेशन में हमने इतनी पढ़ाई करी, उसमें कभी सेल्फ नाम का कोई टॉपिक था क्या? आई नाम का कोई चैप्टर था क्या? कोई ऐसी एक्सरसाइज थी कि लुक एट योर माइंड, लुक एट योर फियर्स, लुक एट योर डिज़ायर्स? ऐसा कुछ नहीं था ना। तो दुनिया भर के बारे में तुमको बता दिया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, मैथमेटिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ये सब तो बता दिया। ये भीतर क्या चलता रहता है उस हमें कोई बताया नहीं जाता। सो द इनसाइड्स रिमेन अनडिस्कवर्ड। तो वो वहाँ से जब कोई इंस्टिंक्ट चलती है, बहुत एनिमलिस्टिक, बहुत वायलेंट, हमें पता ही नहीं होता है क्या हो रहा है, एंड वी फॉल प्रे टू इट। दैट्स वन पार्ट। द सेकेंड पार्ट इज, इंस्टेड ऑफ बीइंग रिलीजियस, वी आर अ वेरी मोरल सोसाइटी with very dominating moral and social codes, और वो बहुत रिग्रेसिव कोड्स भी हैं। और उसके कारण स्पेशली इन द नॉर्थ, men cannot even talk freely to women. अब इन दोनों चीज़ों को आप जोड़िए तो साथ में क्या आता है? एक तो भीतर से कामना और वासना बिल्कुल उबल रही है, ठीक है, और the fact of that other human being who happens to be a woman, उसका फैक्ट आपको पता नहीं चलता क्योंकि आपको कोएड स्कूल में भी जाने नहीं दे रहे।
आप बाजार में भी महिलाओं के साथ साधारण मिंगलिंग नहीं कर सकते। यहाँ तो एक ह्यूज प्रेशर है लस्टफुल इंस्टिंक्ट का भीतर, और बाहर जो फैक्ट है उस ह्यूमन बीइंग का आपको पता नहीं चलने दिया जा रहा। तो उस फैक्ट की जगह आपके पास क्या है? इमेजिनेशन। लॉट्स ऑफ वेरी वेरी लस्टफुल एंड वेरी वायलेंट इमेजिनेशंस। ठीक है, यहाँ इंस्टिंक्ट है, और इंस्टिंक्ट then is fed by and feeds into a lot of imagination, and that results in that pressure cooker like situation and an ultimate explosion, वो रेप है। अब ये दोनों चीज़ें रिलेटिवली कम हो जाएं अगर सबसे पहले मेरी ठीक से इनर एजुकेशन हुई हो, और दूसरा मेरी सोसाइटी इतनी लिबरल हो कि बचपन से ही एक बहुत कॉमन सी बात हो दैट बॉयज एंड गर्ल्स आर गोइंग टुगेदर। ठीक है, उसको ऐसे नहीं देखा जाए दैट एवरीथिंग इज नेसेसरली कार्नल, नेसेसरली सेक्सुअल। देयर आर सो मेनी प्लेसेस इन आवर कंट्री वेयर द फर्स्ट कॉन्टैक्ट दैट अ मैन हैज विद अ वुमन, नॉट जस्ट सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, इवन कैजुअल इंटरेक्शन, इज आफ्टर मैरिज, एंड देन what results from that is marital rape. आपने जो बोला 1 rape per 16 minutes, that is not even inclusive of marital rape. The Indian government has submitted to the Supreme Court that the institution of marriage will continue to remain exempted from the definition of rape. तो इंडियन गवर्नमेंट मानना ही नहीं चाह रही है कि मैरिटल रेप जैसा कुछ होता भी है। Wait, so it's legal in India for a husband to rape his wife? Yes. They are saying we'll take it as an offense, but not as rape. So it will be, we are ready to categorize it as a separate kind of offense. Oh my God. वो जो उनके kind of exact words हैं वो ये हैं कि अगर हमने रेप की परव्यू में इसको भी ला दिया, मैरिटल रेप को भी ला दिया, तो जो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज है वो कोलैप्स कर जाएगा। क्योंकि अब whatever arguments they have. So they are saying is we can have nothing like marital rape in India. We are not supposed to believe that the husband can rape the wife. Wow. ठीक है, तो ऐसी तो ये सोसाइटी है। That's like ownership then. You're basically saying the wife is the property of the man. The wife is the property of the man. That's all it is. Right. So if a man forces himself on the wife, that's not to be called as rape. Wow. Right? And it's very generous of them to say, no, we'll consider it as some kind of offense if the wife in fact comes forward to complain. It's some kind of offense, but not rape. अब वो कैसा offense है राम जाने मुझे। तो Wow, that's shocking. So एक तो होता है कि दो लोग हैं जो एक दूसरे को बहुत एक एलिवेटेड पॉइंट से देख रहे हैं, एंड दे हैव इन फैक्ट फॉरगॉटन ईच अदर्स जेंडर। ठीक है, one person, one human being talking to another human being or interacting with another, working with another human being, and the gender has kind of become irrelevant. एक तो ये सिचुएशन होती है, बहुत प्यारी, बहुत खूबसूरत सिचुएशन होती है ये। उतनी नहीं भी हो पाए अगर, तो कम से कम इतनी तो होनी चाहिए ना कि इतना सप्रेशन मत रखो कि आपके दिमाग में दूसरे के लिए सिर्फ इमेजिनेशन ही इमेजिनेशन चल रही है। और इमेजिनेशन क्यों चल रही है? क्योंकि भाई साहब भीतर शरीर है, जवानी है, हार्मोन्स हैं, इंस्टिंक्ट्स हैं, और उनके कारण एक प्रेशर है। एंड देन देयर इज अ लॉट ऑफ, इंडिया इज सपोजिटली द बिगेस्ट कंज्यूमर ऑफ पॉर्न इन द वर्ल्ड। आपका क्या, सिंस यू मेंशन पोर्नोग्राफी, ओके, मेरा व्यू ऐसा है कि इफ फर्स्टली आई डोंट प्रमोट द आइडिया ऑफ पोर्नोग्राफी, बट अगर मैं एक मोनोगमस रिलेशनशिप में हूँ, ओके, आई एम नॉट कंफर्टेबल विद द आइडिया of anybody watching pornography. I'm just not. I feel it's cheating on your partner, because अगर आपको sexual gratification मिल रहा है outside of a monogamous relationship, then to me वो digital हो या real में हो या जैसे भी हो, it's still seeking gratification elsewhere. Yes. Yeah. So what are your views on pornography overall? See, I'll extend it to say that even your relationship with you talked of a monogamous relationship, even your relationship with a partner, why does it have to have sex at the center? You know, sex can be an incidental thing at most. You're not born to just
be worried about each other's genitals. That's not what human relationships are supposed to be about. Yeah. You know, good companionship, ability to uplift each other, ability to show the mirror to the other. That's what constitutes a good relationship. Sex may happen, sex may not happen. That should be such a small thing that no one cares about it, no one even notices it. When, even with your partner, sex is a small thing, why would you have the time or the attention or the inclination to search for sex online? Elsewhere. Yeah. It will become irrelevant, not immoral, irrelevant. I mean, it would seem like an absurd idea. Not something that is prohibited, but not something that you would have any inclination to go into. Yeah. Not because your partner would get angry. No, if my wife comes to know of it, she'll be very angry that I'm watching porn. But because you are not especially sexually inclined even towards your wife. The wife is probably available as a body. But even towards her, you're not very inclined. Neither is your wife of the nature that she is heavily inclined for sex. Yeah. Right? And yet the two of you have a beautiful relationship. Now in this scenario, why would either of you care too much about porn? Porn drops dead as an irrelevance. Yeah. So that's the real way in which inner progress happens. Things just drop off. Like you said about the meat and the About the dairy, meat. it just happens very organically. Organically. Someone comes and says, something I just noticed today. What? I haven't watched any porn since the last 4 months. Yeah. No. If someone comes and says that, I know real progress is happening. Because this is coming as a surprise to him. Yeah. That he hasn't watched any porn since the last 4 months. Yeah. In India, that's a big thing, by the way. Yeah. For a man to not watch porn for 4 months. Is porn a big thing in India? Very big thing in India. India is the biggest consumer But of porn, isn't I it just banned said. in India? How are they accessing it? Had it been banned, the websites would have not been functional. Yeah. They are very much accessible. So who banned it and Fascinating. who exactly are the enforcers of the ban? Yeah. Wow. I'm pretty sure if a government actually enforces such a ban, Yeah. it would lose at the hustings. Yeah. Wow. Well, that's a whole other rabbit hole we could go down. Okay, so I have some questions that people have sent me. I'm mindful of time because we have been chatting for a while. Okay, so I asked people to send me in questions, and I was personally very interested in these as well. Can you be a Hindu if you are eating meat? You can be a Hindu, but you won't be that which Hinduism really claims to be and must be. Hinduism claims to be a descendant of the Sanatan Dharma. In fact, Hinduism must be Sanatan Dharma itself. So you will be technically a Hindu, because you can be Hindu while doing anything, while being anything. Hinduism is not an exclusive term. You can even say, I'm a serial murderer. You can still be a Hindu. There exists no body to disqualify you from being a Hindu. So technically you can continue to be a Hindu, but you won't be abiding by the Sanatan Dharma. Okay. ओके, तो हमारे पास एक कमेंट आया था कि जिसमें किसी ने कहा था कि वो एक मिडिल क्लास घर में रहते हैं और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है वीगन बनने का. अगर वो नॉनवेज नहीं खाएंगे तो उनका जो फैमिली है वो बोलते हैं कि उनको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा. नहीं तो इतने लोग जो नॉनवेज नहीं खाते, ये क्या मेल न्यूट्रिशन के शिकार हैं? कैसा सवाल है? मतलब इसमें सवाल है भी क्या? इस सवाल के मूल में ही, बेसिस में ही इग्नोरेंस है ना. वी हैव द ग्रेटेस्ट टेनिस प्लेयर ऑफ ऑल टाइम अलाइव इन द मिडिल ऑफ अस. वो हमारी ही जनरेशन के हैं, अभी रिटायर भी नहीं हुए हैं. आई एम टॉकिंग ऑफ नोवाक जोकोविच, एंड ही इज अ वीगन सिंस हाफ अ डेकेड नाउ. और वीगन होने के बाद उन्होंने 8-10 ग्रैंड स्लैम और ओलंपिक गोल्ड और जीत लिया है.
तो वो क्या न्यूट्रिशन की कमी के साथ ग्रेटेस्ट टेनिस प्लेयर हैं. We have weightlifters, we have Olympic athletes, Top athletes. Yes, we have medal winners जो कि सब वीगन हैं. Yeah. तो वीगन होने से, अरे मैं वीगन हूँ, मेरे में क्या न्यूट्रिशन की कमी दिख रही है? Yeah. तो आप वीगन हो तो कौन सी न्यूट्रिशन की कमी आ गई भाई जो कि मीट से मिल जाती है? ये कैसा सुपरस्टिशन है? एंड आई थिंक थोड़ा बेसिक रिसर्च करके आप देख सकते हो कि जो कॉमन इंडियन जो हम खाते हैं, नॉर्मल मतलब महंगा कुछ नहीं, नथिंग एक्सपेंसिव, एवरीडे स्टफ दैट वी ईट, मोस्ट ऑफ इट कैन बी वीगन और इज सस्ता और हो वीगन. जाता है, सस्ता हो जाता एग्जैक्टली. आप मीट नहीं खा, इट्स लाइक समवन सेड टू मी वीगन इतना महंगा है. आई एम लाइक, आप हमें बोल रहे हो कि दाल इज मोर एक्सपेंसिव देन चिकन? रियली? लाइक कम ऑन. वीगन महंगा है, इसकी इमेज ये जो मार्केट के प्रोडक्ट्स हैं ना, हाँ. और जो थोड़ी सी अप मार्केट ईटरीज हैं, या इन्होंने वो इमेज फैला दी है. या नहीं तो अगर बिल्कुल किचन पे जाकर देखो या उस लेवल पर, तो वीगन होना तो बहुत सारे पैसे बचा देता है. एंड वो कोई भी, मतलब अगर आप मीट ईटर भी हो, आप एक्सपेंसिव स्टेक हाउस पे जा सकते हो, या नहीं तो आप सस्ता मैकडॉनल्ड्स पे भी जा सकते हो. बिल्कुल. इट्स सेम विद वीगनिज्म. यू कैन गेट, you know, as you just said, cheap stuff and expensive stuff. It's just doing some research. Okay, so we're going to move on from that question. All right. Acharya ji, eating meat is the circle of life. Grow up. Yes, it is a circle of animal life. But why do you call yourself human with such pride then? ये सब ठीक है, बिल्कुल ये है कि हर जानवर अपने शरीर से कंडीशनड होता है, तो वो मांस खा सकता है. We don't preach veganism to tigers, do we? And we do not say a tiger is such a violent being क्योंकि वो मांस खाता है. उसके साथ न तो वीगन एप्लीकेबल है न वायलेंस एप्लीकेबल है, क्योंकि वो एक जानवर है और वो बेचारा कंडीशनड है. हमें उससे कोई समस्या नहीं है, उसका नेचर में है, ये उसके बायोलॉजिकल नेचर में है. बट अ ह्यूमन बीइंग इज वन हु कैन stand aside and witness her biological nature and choose to do what is right. हमारा तो बायोलॉजिकल नेचर भी, वो जो आपका आज का क्वेश्चन था, हमारा तो बायोलॉजिकल नेचर भी ये नहीं है कि हम कार्निवोर हों. पर अगर हो भी, अगर हम ये भी मान ले कि चलो आप मीट ईटिंग कम से कम किसी तरीके से अडेप्ट करके अफोर्ड कर सकते हो, आप कुछ कुछ करके पचा लेते हो और कम से कम कुछ काम चल जाता है. अगर है भी तो भी as human beings you have a consciousness that must choose. That choice is not available to a fish or a cow or a tiger. You cannot ask a cow to choose कि तुझे घास खानी है या मांस खाना है. ये चॉइस टाइगर के पास भी नहीं है, पर ये कॉन्शियस चॉइस ह्यूमन बीइंग्स के पास है. तो हम ये बहुत पुराना रुडिमेंट्री आर्ग्यूमेंट नहीं दे सकते कि सभी तो मांस खाते हैं तो मैं भी खाऊंगा. एक आता है कि अगर मांस खाना इतना बुरा होता तो भगवान ने शेर क्यों बनाया? अगर भगवान चाहते ही यही थे कि शाकाहार चले तो शेर बनाया क्यों? अब शेर बनाया है, इसका मतलब भगवान भी चाहते हैं कि मांस खाया जाए. भगवान या गॉड या अल्लाह वो भी चाहता है कि मांस खाया जाए, तो जब वही चाहता है तो हम खाएंगे. शेर अपने बच्चे को भी खाता है, रेप भी करता है, बहुत सारे, ब्रश नहीं करता है. हाँ. और फोन नहीं यूज करता है, कपड़े नहीं पहनता है. ठीक है, घर में नहीं रहता है, लैंग्वेज नहीं है उसके पास, ट्विटर पे अकाउंट नहीं है उसका. तो आपको शेर बनना है तो पूरी तरह शेर बनो ना फिर. तो आप ह्यूमन बीइंग हो, यू आर सपोज टू चूज. कॉन्शियसनेस कोई चीज़ होती है कि नहीं? कॉन्शियसनेस की बात हम शेर या अर्थवर्म के लिए नहीं करते, हम इंसान हैं, हमें चूज़ करना पड़ेगा. तो और चूज़ में भी क्या है यार, बायोलॉजिकली भी अभी बात हुई, आप ये पूरा अगर देखेंगे तो हम तो बायोलॉजिकली भी कोई बिल्ट नहीं है मांस खाने के लिए. आप खा लो पचा लो अलग बात है, तो आपकी मर्जी है, ज़बरदस्ती कर रहे हो तो कर लो. लेकिन अगर कोई मुझे ये सिद्ध भी कर दे किसी वजह से कि इस स्टेज पे साहब आपको ये चीज़ लेनी चाहिए और इससे आपको फ़ायदा हो जाएगा, मैं तो तब भी नहीं लूँगा. बिकॉज फॉर मी कॉन्शियसनेस इज मोर इम्पॉर्टेंट देन बॉडी. Even if I have to choose a pleasure, I'll choose the pleasure of an elevated consciousness rather than the pleasure of body. So, thank you for advising me to grow up. I'll heed that advice. Yeah, you have to grow up, obviously. But you know, it's like when people say that to me, I think that what separates us from other animals, it's obviously the fact that
number one, we have a choice to make. We can choose violence or choose non-violence. That comes from an ability for moral and rational thought, which other animals don't have. It just so happens to be an extra layer कि हमारे जो bodies हैं वो herbivorous हैं, but ऊपर से हम सोच सकते हैं, हम सोच सकते हैं और हम समझ सकते हैं। सोचना भी इसलिए होता है ताकि आप समझ पाओ, हम देख सकते हैं, हम विटनेस कर सकते हैं। तो ये सब ठीक है, मतलब मैं उसी दिशा में जा रहा हूँ दिशा में आपने कहा कि हम जानवरों से भिन्न हैं क्योंकि हमारे पास कुछ है जो अलग है। आपने कहा विचार, मैं उस विचार के साथ साथ उसमें जोड़ रहा हूँ कि बोध और साक्षित्व, द एबिलिटी टू विटनेस व्हाट इज गोइंग ऑन। अल्टीमेटली द डिफरेंस इज दैट वी हैव चॉइस, एनिमल्स डोंट हैव चॉइस। फिश के पास चॉइस थोड़ी ही है कि वो इसकी जगह ये करे कि वो करे। हर जानवर अपनी प्रकृति से बंधा हुआ है, उस अर्थ में गुलाम है। और हम फ्रीडम के लवर्स हैं, वी डोंट लाइक टू बी इन बॉन्डेज। इन सम सेंस सारे जानवर तो बॉन्डेज में जीते हैं ना। कुत्ता जैसा पैदा होता है बेचारा वैसे ही मर जाता है, वो पीएचडी थोड़ी ही करता है, वो तो कुत्ता है, कुत्ता ही जिएगा, बेचारा कुत्ता ही मरेगा। पर हम कहते हैं मैं पैदा हुआ था इग्नोरेंस में, अज्ञान में, but I'll study, I'll gather knowledge, I'll gather experience, I'll get exposure, I'll see, I'll meet, I'll understand, I'll love, I'll expand, I'll rise. These things are what make us human. Yeah. तो उसमें जब अपनी कन्वीनियंस हो तब ये आर्गुमेंट दे देना कि मैं ऐसा काम करूंगा क्योंकि जानवर भी करते हैं, ये बड़ी गड़बड़ बात है। ये तो बड़े opportunistic argument है। Opportunistic, yeah, exactly right. Yeah, I think people just choose to be stupid deliberately. Selfish, they think they are being smart. It's just foolish. Yeah. Okay, let's see. We have a last one here. One we've already answered because they had asked about the sharp teeth and all of that. Veganism in India is a Western propaganda. India treats its animals better compared to other countries. We treat them like our own family. So there's no need to change anything. We just need to ensure good animal welfare. ऐसी बातें आमतौर पे वही लोग बोलते हैं जिन्होंने न तो दुनिया के बारे में पढ़ा होता है, दूसरे देशों के बारे में जिन्होंने कभी अच्छी रीडिंग नहीं करी होती है, और जो कभी दूसरे देश गए भी नहीं होते। ज़्यादातर तो इनमें से लोग वो होते हैं जो ऐसे होते भी नहीं कि जिनको कहीं जाने का वीज़ा मिलेगा। ठीक है, यही हैं वो जो यहाँ बैठ के कहते रहते हैं कि दुनिया बड़ी गड़बड़ है, हम ही सबसे महान है। कि दुनिया अपने जानवरों को इल ट्रीट करती है और हम अपने जानवरों का बड़ा ख्याल रखते हैं। मैं चाहूँगा कि ये लोग कभी जो डेवलप्ड वर्ल्ड है उसको विज़िट करें, तो इन्हें पता चलेगा कि बात क्या है। और ये मैं तब कह रहा हूँ जब मुझे बहुत अच्छे से पता है कि पर कैपिटा मीट कंजम्पशन वेस्ट में इंडिया से कहीं कहीं ज़्यादा है, मैनी टाइम्स ज़्यादा है, मुझे पता है। पर मुझे ये भी पता है कि अवेयरनेस भी सबसे ज़्यादा उनमें ही आ रही है, एनिमल वेलफेयर और एनिमल राइट्स की। मुझे ये भी पता है कि भारत के ज़्यादातर शहरों में आप अगर एनिमल प्रोडक्ट नहीं खाना चाहते तो आपको कुछ नहीं मिलेगा कि क्या खा पाओ, फल खाओगे बस। लेकिन अगर आप जर्मनी में हो या लंदन में हो तो आपको वीगन आउटलेट्स की कोई कमी नहीं मिलने वाली। और मुझे भी पता है कि जर्मन्स फ्लैश बहुत खाते हैं, ठीक है, वो हिस्ट्री है उनकी जिसका कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। मैं ये भी तो देखूँगा ना कि आज जब एक नई अवेकनिंग है तो उसको अडॉप्ट करने में भी तो वेस्ट सबसे आगे है ना। यही बात पॉल्यूशन को और कार्बन एमिशन को लेके कही जाती है। कहते हैं कि पहले तो सारा कार्बन एमिशन वेस्ट ने कर दिया ना, तो अब हम भी करेंगे। इंडिया कहता है हमने नहीं किया, हम बड़े साफ लोग हैं, वेस्ट ने करा। वेस्ट ने पहले कर दिया था, हम अब करेंगे। भाई वेस्ट ने कर दिया था तो क्लीन अप करने में भी तो वेस्ट सबसे आगे है ना। और अब धीरे धीरे भारत दुनिया का सबसे बड़ा पॉल्यूटर बनता जा रहा है। नंबर 2 नंबर 3 पे हम ऑलरेडी चल रहे हैं सारे इंडिसेस पे। तो ये एकदम इट्स अ ट्रेवेस्टी ऑफ आर्ग्यूमेंटेशन कि किसी ने पहले कुछ गलत करा था, आप उसको आधार बना के कहो कि मैं आज गलत करूँगा। और आप ये नहीं देखना चाहते कि वो व्यक्ति आज कितना सुधर रहा है, कितना बेहतर हो रहा है, कॉन्शियसनेस के कटिंग एज पे ऑपरेट कर रहा है। एक तरीके से वो अतीत में भी आपसे आगे थे जब इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात हुई, और आज जब क्लीनिंग अप की बात हो रही है तब भी वो आपसे आगे हैं। तो आप क्या हमेशा पीछे ही रहना चाहते हो? आप कभी आगे नहीं आना चाहते। आप ये कह रहे हो कि मैं तो हमेशा उनके पीछे पीछे ही चलूँगा, क्लीनिंग अप वो कर लेंगे, हम अपनी बात में शुरू करेंगे। ये कहाँ की बात है? ऐसा
I mean, on that particular topic, I was reading online that India is now the #1 plastic polluter in the entire world. And the numbers are astronomical. And the amount of times I have seen people plastic पानी पिया, bottle लेके फेंका. मतलब 1 second का thought भी नहीं आता. And correct me if I'm wrong, we are not just #1. We are way ahead of the #2. Way ahead of the #2 plastic polluter. अगर मैंने जो डेटा देखा है कोई, हाँ, कई टाइम्स #1 ही नहीं है, #2 से a few times आगे हैं, 5 to 6 times आगे हैं. Wow. So that's the kind of distinction we hold. Not just #1, 5 times ahead of #2, 5 times, 3 times, 6 times, something, but way ahead of #2. हम इतने बड़े पॉल्यूटर हैं, और तब भी हमें बार बार ये कहना है वेस्ट ये तो बेकार चीज़ होती है. दिस काइंड ऑफ हॉलो नेशनलिज्म आई डोंट कंकर विथ. ठीक है, इफ इंडिया हैज़ टू बी ग्रेट, it must be, the greatness must be founded on something very real, something as real as the Vedantic philosophy that I really love. That's the thing about India that makes India lovable. Similarly, there are many other opportunities, so many other frontiers where greatness is possible. Yeah. अगर हमें greatness claim करनी है, then first of all let us be really great. वही तो सही होगी ना बात. कुछ सब गड़बड़ कर रखी है और उसके बाद भी बार बार बोलना है मैं महान हूँ, मैं महान हूँ. भारतीय अगर महान नहीं है तो भारत महान कैसे हो जाएगा? I was reading that by being plant-based, you reduce your carbon footprint by 73%, which is massive. Can you explain a little bit in very layman terms, how does choosing not to eat meat and dairy impact your carbon footprint by such a big degree? In many ways. सबसे पहले तो ये कि हमको ये पता नहीं होता है कि जो हम खा रहे हैं वो कहाँ से आ रहा है. हम सोचते हैं कि ये मुर्गा, ये बकरा जो इंडिया में ज़्यादा खाया जाता है, मुर्गा, बकरा, मछली, हम सोचते हैं मुर्गा, बकरा, मछली तो ऐसे ही टहल रहा था, उसको किसी ने पकड़ लिया और मार दिया और हमें खिला दिया. ऑलमोस्ट ऐसे कि जैसे सड़क किनारे कोई आम का पेड़ था, पेड़ तो था ही पहले से, मैंने जाके आम तोड़ के खा लिया. इस हद तक लोगों में इग्नोरेंस है कि कहते हैं कि अगर ये खाओगे नहीं तो ये मुर्गे ही मुर्गे फैल जाएंगे ना चारों तरफ, क्योंकि ये तो खुद ब खुद पैदा हो रहे हैं, अपना ऐसे ही पेड़ से उतर रहे हैं, ज़मीन से फूट के बाहर आ रहे हैं. ये एक्चुअली आर्ग्यूमेंट देते हैं लोग कि मुर्गे नहीं खाओगे, बकरे नहीं खाओगे तो एक दिन ही इतने सारे हो जाएंगे, तुम्हारे घर में घुस आएंगे. उनको समझ में नहीं आता कि इनको फार्म्स में पैदा किया जाता है. 99% आप जो मीट खा रहे हो वो कोई नेचुरल प्रोडक्ट थोड़ी ही है. ठीक वैसे ही जैसे कि आप अगर वीट खा रहे हो तो वीट ऐसा थोड़ी है कि बारिश हुई थी तो कहीं पे वीट उग गया तो आपने खा लिया. वीट की खेती होती है ना, वैसे ही मीट की भी खेती होती है, एनिमल फार्म्स है. वो जब खेती होती है तो अब एक मुर्गा है, बकरा है, और अभी मैं उनकी राइट्स की बात नहीं कर रहा. अभी आपने कहा क्लाइमेट चेंज और इसमें क्या रिलेशन है, तो हम वो बात कर रहे हैं. अब एक मुर्गा आपके खाने के लिए आए तो पहले उतना बड़ा मुर्गा पैदा करना पड़ेगा ना, वो कहाँ से पैदा होगा? ठीक वैसे जैसे आपके पास अगर वीट आता है तो पहले पैदा करना पड़ता है, पूरा प्रोसेस होता है. उस प्रोसेस में हल चलाने से लेके फर्टिलाइज़र से लेके पेस्टिसाइड तक सब कुछ आता है ना. वैसे ही मुर्गा जब आपके पास आता है या बकरा आता है या भैंसा खाते हैं बहुत लोग, काट के कहते हैं भैंसे से चीप प्रोटीन मिलता है, वो सब जो चीज़ें आपके पास आती हैं तो पहले उनको उतना बड़ा करना पड़ेगा ना. 500-700 किलो का भैंसा है, वो 500-700 किलो कैसे होगा? या बकरा है आपका इतना बड़ा, वो क्या खाता है? उसको भी तो पहले आप ग्रेन ही खिलाओगे, ग्रेन ही तो खाते हैं वो बहुत सारा ग्रेन खाएगा क्योंकि उसके 1 किलो मांस के लिए आपको उसे कम से कम 15 से 20 किलो ग्रेन खिलाना पड़ेगा. तो आपने 1 किलो मांस खाया बकरे का, भैंसे का या चिकन का, तो उसके लिए उसको 15-20 किलो पहले क्या फीड करना पड़ेगा? ग्रेन फीड करना पड़ेगा. वो ग्रेन कहाँ से आएगा? वो उगाना पड़ेगा. दुनिया में 70% खेती होती है इन जानवरों को ग्रेन खिलाने के लिए. किन जानवरों को? जिनको आप मार के खाओगे. मुझे अगर एक बकरा खाना है तो पहले उस बकरे को उतना बड़ा करना है, उसके लिए उसको खिलाना पड़ेगा
और उसको खिलाने के लिए खेती करनी पड़ेगी। और ये मैं सिर्फ दुनिया की बात नहीं कर रहा, भारत में भी ज़्यादातर एटलीस्ट जो सोय पैदा होता है वो सब इसीलिए पैदा होता है ताकि वो मीट वाले जानवरों को खिला के उनको बड़ा करा जा सके। 70% खेती होनी है ये मीट वाले जानवरों को खिलाने के लिए। उस खेती के लिए ज़मीन चाहिए, खेती करनी ज़मीन चाहिए। सिर्फ 30% खेती होती है वेजिटेरियंस को खिलाने के लिए, 70% खेती होती है नॉन वेजिटेरियंस को खिलाने के लिए। कितनी अजीब बात है। और ये जो 70% खेती होती है इससे जो हमारी कैलोरी और प्रोटीन का जो परसेंटेज आता है वो 20-40% से ज़्यादा नहीं है। जो 70% खेती है उससे जो ह्यूमैनिटी को जो कैलोरीज मिल रही हैं और जो प्रोटीन मिल रहा है वो बस 20-40% है। तो बेसिकली ये जो सारी खेती हो रही है मीट के लिए, ये सारी खेती सुपर इनएफिशिएंट है। इस खेती में दो चीज़ें लगती हैं, एक तो ज़मीन और एक तो पानी, और जो केमिकल्स लगते हैं वो अलग है। दुनिया में जो फ्रेश वाटर शॉर्टेज है बहुत बड़ी, वो इसलिए है क्योंकि इन जानवरों की खेती के लिए आपको पानी चाहिए, और वो जानवर भी जो आप मीट के लिए बड़ा कर रहे हो वो भी तो पानी पीता है ना। इतना बड़ा होने के लिए पहले बहुत सारा पानी पिएगा, उससे फ्रेश वाटर शॉर्टेज है दुनिया में। जो खेती के लिए ज़मीन आती है वो आती है जंगल काट के। जो आप जंगल काटते हो खेती करके एक जानवर खिलाने के लिए, तो आप दूसरे जानवरों की पूरी स्पीशीज़ को साफ कर देते हो। बायोडाइवर्सिटी एक्सटिंक्शन का सबसे बड़ा रीज़न, उदाहरण के लिए जो अमेज़न के जंगल हैं वो क्यों कट रहे हैं, ताकि वहाँ फार्मिंग हो सके। वो फार्मिंग क्यों होनी है, क्योंकि ब्राज़ील को मीट एक्सपोर्ट करना है जिसमें बीफ भी शामिल है। अमेज़न के पूरे जंगल साफ करे जा रहे हैं ताकि वहाँ खेती हो। खेती क्यों हो, ताकि वहाँ ग्रेन पैदा हो। ग्रेन क्यों पैदा हो, ताकि वो भैंस बड़ी हो जाए। भैंस क्यों बड़ी हो जाए, ताकि उसका जो मांस है वो फिर खाया जा सके और एक्सपोर्ट करा जा सके। तो दुनिया में इस वक्त क्लाइमेट चेंज का जो बड़े से बड़ा रीज़न है वो यही है। हम सिर्फ बात करते हैं कि जो पूरा ट्रांसपोर्ट सेक्टर है हम उसकी बात कर देते हैं, जो फॉसिल फ्यूल वाली बात है उसी की बात होती है, सिर्फ उसी की बात होती है। वो अगर नंबर 1 रीज़न है तो ये नंबर 2 रीज़न है, मांस खाना। और नंबर 2 भी कोई बात नहीं करता, और नंबर 2 भी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम इस रीज़न को जितना सप्रेस कर सके उतना सप्रेस करके रखते हैं। अगर इस पर सारा डेटा निकल के आए तो ये भी हो सकता है कि जो फॉसिल फ्यूल बर्निंग से कार्बन एमिशन होता है और जो फूड से कार्बन एमिशन होता है वो ऑलमोस्ट कंपेरेबल निकल के आए। पर इसकी कोई बात नहीं करता कि आज जो प्लेनेट तबाह हो रहा है उनके कारण हो रहा है जिन्हें मीट खाना है। आप मीट खा के प्लेनेट को ख़राब कर रहे हो। लोग बहुत खुश हो जाते हैं, कहते हैं कि साहब हमने कार पूलिंग कर ली, ठीक है, लाइट ऑफ कर दी या कि ईवी खरीद लिया, तो उनको लगता है कि हमने कार्बन एमिशंस कम कर दिए। और ईवी लेकर के वो गए हैं और चिकन बर्गर ऑर्डर कर रहे हैं। ईवी लेके गए हैं और चिकन बर्गर ऑर्डर कर रहे हैं। उसके बाद ईवी लेकर के वो फर्टिलिटी एक्सपर्ट के पास गए हैं और कहें कि एक बच्चा और पैदा करना है, हो नहीं रहा है, बताइए कैसे करें। वो कह रहा है IVF वगैरह करो, ये करो, वो करो। और ये ईवी का प्राइड है इनका पूरा। ये अपना इंस्टा पे दिखाएंगे, देखो क्लाइमेट चेंज रोकने के लिए मैंने ईवी खरीदी है, और ईवी से मैं मैकडी का फिर फिश बर्गर और मटन बर्गर खाता हूँ। ये तुम क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो? हिपोक्रेसी। अभी मैं फ्लाइट से आया तो उसमें उनका जो वहाँ पे वो जो पूरा ट्रैवल का वो जो उनका ब्रोशर मैनुअल जो रखे रहते हैं उसमें ये भी बता रहे थे कि हमारे जो नए सीरीज़ के प्लेन्स हैं वो इतने कम एमिशन करते हैं। अच्छी बात है। फिर उन्होंने मेन्यू दिया खाने का, उसमें सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है, पारसी मटन कटलेट। तुम पागल हो, तुम्हें सचमुच दिखाई नहीं दे रहा कि कितनी बड़ी इनकंसिस्टेंसी है? तुम क्या कर रहे हो? ये तुम कार्बन एमिशन कम करने की बात कर रहे हो और पहली चीज यहां पर लिखी हुई है मटन कटलेट। ये क्या है? तुम्हें पता भी है कि मटन के लिए कितना सारा कार्बन एमिशन होता है? और इसमें अभी बहुत और तरीकों से बताया जा सकता है। देखिए, जो ये ऑर्गेनिक मैटर होता है ना, जैसे खेती के लिए जब आप उगाते हो, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। अभी अक्टूबर नवंबर चल रहा है, पराली जलाना आपने सुना है? पराली जलाना, तो वो जो पूरा हेज छाया रहता है, जो पूरा वो जो स्मॉग होता है ना, जो नॉर्थ इंडिया पे छाया रहता है, उसका ऑर्गेनिक रीज़न है, वो कोई इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट नहीं है।
हम इतने इंडस्ट्रियलाइज्ड हैं ही नहीं कि इंडस्ट्रियल धुएं से हमारी हालत ख़राब हो जाए। ये जो खेतों की फसलें होती हैं ना, उनको जलाने से ये सारा धुआं फैलता है। पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, वहाँ सब जलाया जाता है, ये सब हो जाता है। इसी तरीके से जब आप खेती करते हो तो वो जो ऑर्गेनिक मैटर पैदा होता है, वो ऑर्गेनिक मैटर में से आप जानवर को सारा तो नहीं खिला देते, आप जानवर को तो बस ग्रेन खिलाते हो। वो जो बाकी था उसका क्या होगा? वो डिके करेगा, और जब ऑर्गेनिक मैटर डिके करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। एक पेड़ या एक पौधा दुधारी तलवार होता है, डबल एज्ड स्वॉर्ड। जब वो बन रहा होता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड लेके उसकी सेक्वेस्टरिंग करता है, और वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वुड बन जाती है। वो वुड बन जाती है। वो अगर जिंदा है तो कार्बन डाइऑक्साइड को सोख रहा है, इट्स अ सिंक। जिस दिन आपने उसको मार दिया, वो जमीन पे पड़ गया, वो लॉग ऐसे पड़ा हुआ है, अब वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। तो ये जो हम खेती करते हैं उसमें भी जो ऑर्गेनिक मैटर बच जाता है वो पॉल्यूशन का ही काम आता है। चाहे आप उसे जलाओगे तो वो होगा जो अभी दिल्ली में हो रहा है, और नहीं जलाओगे वो डिके करेगा तो कार्बन रिलीज करेगा। आप जलाते हो तो भी कार्बन रिलीज होता है, आप जलाने से भी कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी ऑक्साइड्स रिलीज होते हैं, और अगर वो डिके करता है तो भी रिलीज होंगे। तो खेती अपने आप में बड़ी गड़बड़ चीज है, लेकिन कहीं ज्यादा खेती करनी पड़ती है जानवर को खिलाने के लिए। अगर जानवर को नहीं भी खिलाना है, इतनी बड़ी जो ह्यूमन पॉपुलेशन है, आप इसको भी सपोर्ट करने के लिए खेती कर रहे हो। एग्रीकल्चर इटसेल्फ इज अ कॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। और मैं यहाँ पर मीट प्रोडक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ। दिक्कत ये है कि मीट प्रोडक्शन इज 10 to 20 times एज एग्रीकल्चर इंटेंसिव एज वेजिटेरियनिज्म। तो अगर मैं सिर्फ समझिए कि दाल चावल खाऊं तो मैंने इतने ग्रेन्स खाए, इतने। लेकिन अगर मैंने 1 किलो दाल चावल खाया तो मैंने ये 2 मुट्ठी ग्रेन्स खा लिए, ठीक है, इतना ही तो होता है। ये दाल है, चावल, इसको पका दिया, खा लिया। लेकिन अगर मैंने उतना ही बकरा खाया एक मील में, लंच में, जैसे मील में दाल चावल हो सकता है ऐसे ही मील में बकरा हो सकता है, मैंने दाल चावल की जगह बकरा खा लिया, तो बकरा खाने में मैंने इतने ग्रेन्स खाए, क्योंकि बकरे के 1 किलो मांस के लिए 20 किलो ग्रेन लगा था। तो जहां मेरी भूख इतने से ग्रेन से मिट सकती थी, एक टाइम की भूख, 1 मील, वो मील इतने ग्रेन्स में मिटी। और उतना ग्रेन पैदा करने में बहुत सारा कार्बन एमिशन होता है, ये है। और कार्बन एमिशन कई तरीके से होता है। अब जैसे गाय है, उसको सिर्फ बड़ा करने में कार्बन एमिशन नहीं होता। जो ये बड़े बड़े मैमल्स होते हैं ना, इनके शरीर से जो गैस निकलती हैं वो फिर कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं होती, वो मीथेन होती है। और मीथेन का जो ग्रीन हाउस पोटेंशियल होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड से कहीं ज़्यादा होता है। तो एक तो उतनी बड़ी भैंस पैदा करो, उतनी बड़ी भैंस को पैदा करो, खिला खिला के उसके लिए खेती करो, उसको खिलाने के लिए। उसके बाद अपने बड़े होने की प्रक्रिया में वो शरीर से जो गैसेस रिलीज करती रहती है वो मीथेन गैस है। और मीथेन वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ग्रीन हाउस गैसेस होती है। तो फूड is, if not the leading cause, at least the second most important cause in climate change. और ये बात almost गुप्त रखी जा रही है, ये पता नहीं लगने दे रहे। Yeah, and it's like one of the easiest things that anyone can change. Anyone can right change. now. हाँ, उसकी जगह हम बोलते हैं मेरी प्लेट पे जो रखा मेरा पर्सनल मैटर है। पर्सनल मैटर क्यों है? How is it the personal choice of that No, animal? no. उसका पर्सनल चॉइस तो नहीं था। एनिमल का भी नहीं है और मेरा भी नहीं है, क्योंकि आप जो खा रहे हो उससे मेरी जिंदगी तबाह हो रही है ना। इट्स ऑलमोस्ट लाइक सेइंग कि मेरा व्हीकल पॉल्यूट कर रहा है, ये मेरा पर्सनल मैटर है। नहीं, आपका नहीं है, क्योंकि आपके पॉल्यूशन से मेरी नाक में भी जा रहा है ना। इट्स ऑलमोस्ट लाइक सेइंग कि आप यहाँ बैठ के स्मोकिंग कर रही हो, आपका पर्सनल मैटर है। हमें पता है आपके वाले में कोई स्मोकिंग कर रहा है, उसका पर्सनल मैटर नहीं है, आपको भी जा रहा है। इसी तरीके से अगर कोई अपनी थाली में मीट खा रहा है तो उसका पर्सनल मैटर नहीं है। Humanity has a right to object. Of course. Humanity even has a right to litigate on that. Yeah. And the litigation must come. We must have a green tax in all its applications, in all its wider sense. उसमें ये भी कवर होना चाहिए कौन क्या खा रहा है। Yeah. I agree with you. And I find that comment very illogical, just on a very
basic common sense level, when people say eating meat is my personal choice, I'm like, well then a pedophile could also say raping a child is my personal choice, because uske man mein उसे लगा कि मुझे करना है. Right? Who are you to say कि incorrect है? Right? उसका morality कह रहा है कि ठीक है. The common the rule of thumb is your freedom ends where my nose begins. Yeah. Pretty much. Well, on that note, thank you so much. I feel like we could chat for hours. But I really appreciate you joining me on Kindness with Amy. Thank you. Thank you so much. Insightful, and I hope that my viewers have enjoyed this I relished it. conversation. I had a gregreat time. Thank you so much, Acharya ji, for joining, and keep inspiring. And it's been a pleasure. I'm glad. Thank you.